Hello, hello, hello. Chalo, get seated. उनको यार वो कैमरा को हिलाओ मत। हेलो हेलो। अरे तू कैमरा को टच मत करो यार। थोड़ा चेयर चेयर वाला पर जो पब्लिक है और मैनेज करना। ओके चलिए बैठ जाइए। हेलो हेलो अतुल, ये कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड। अरे अरे ओ मैडम मैडम मैडम, 2 मिनट रुक, वो करेगा ना। ये डिसकनेक्टेड दिखा रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? आ रहा है क्या? फिर वो डिस्कनेक्टेड क्यों दिखा रहा है? बराबर है ना? आया क्या? अच्छा, लेकिन इधर नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा, इधर चालू करो क्या? ठीक है। Just a second. और एक सेकंड। ऑल गुड, ओके चलो। Good afternoon, friends. Let us proceed ahead. We have discussed some basics on costing. Some basic terms we have discussed yesterday. Let me proceed ahead. So, कहानी शुरू करते हैं. We are talking about fixed cost and variable cost. देख लेना क्या डिस्कस किया हमने. So yesterday I discussed, just a second, let me bring it up. Yes, आ गया? We talked about a fixed cost. I said fixed cost is incurred for creating a capacity. अतुल वहां पर उनका प्रोजेक्टर चालू नहीं है, वो तीसरा वाला. So क्वेश्चन हमने क्या पूछा था? What is a capacity? How much is a capacity? That is a one question. And what is your capacity utilization? That is another question. How much is your capacity? This is going to decide how much is going to be your fixed cost. क्यों बच्चों? Fixed cost किसके लिए होता है? For creating a capacity. जब मैं फैक्ट्री सेट करता हूं, बिल्डिंग सेट करता हूं, for building there is a depreciation or a rent, which is my fixed cost, right? I have to create certain number of employees, that is my fixed cost. So I talked about a fixed cost. Total, we discussed multiple things. Total fixed cost remains constant
in a particular year irrespective of quantity produced, assuming it is within the capacity. Yesterday, I assumed the capacity as how many tons? 1000 tons. If your production is between 1000 tons, that is 0 to 1000, then your fixed cost remains same. Kuch samjha? Then your fixed cost remains same. That is called as total fixed cost. फिर हमने किसका ग्राफ डिस्कस किया था? Fixed cost per unit. As your quantity produced increases, fixed cost per unit decreases. Fixed cost per unit decreases how? Average fixed cost है ना वो? Fixed cost per unit कैसे decrease होता है? क्योंकि क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ गई है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ती है क्या? नहीं. अज्यूमिंग इट इज विद इन द कैपेसिटी लेवल. इफ यू हैव टू क्रॉस अ सर्टन कैपेसिटी लेवल, रिमेंबर फिक्स कॉस्ट ऑल्सो चेंजेस. कैन अ फिक्स कॉस्ट चेंज फ्रॉम ईयर ऑन ईयर बेसिस? देन आई टुक ईयर ऑन ईयर. ईयर ऑन ईयर फिक्स कॉस्ट डज गो अप. दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? प्राइस लेवल चेंजेस या इंफ्लेशन. हाँ ना? अब देखो, ये क्या था? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. ये क्या था? एज ईयर ऑन योर क्वांटिटी प्रोड्यूस गोज बियॉन्ड व्हाट? अ सर्टन कैपेसिटी, सर्टन लेवल. अब वो लेवल कितना होगा उस, दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. जनरली एज योर capacity is breached, you have to incur additional cost for creating additional capacity. I said this classroom has a capacity of 800. If we have to give more admissions or you have to get more students, what we need? Additional classrooms you have to get, right? For additional classroom, there is additional fixed cost. So, मैंने ये टेबल बना के दिया था. Quantity produced, fixed cost, average cost. Average cost comes down, total remains same up to a capacity. You increase the capacity beyond 1000. I took 1000 yesterday's example. Then obviously what will happen? Fixed cost will change. How much will be? That depends on case to case. That is not a debatable matter. Okay? Then we talked about variable cost. For exam purposes, unless otherwise given, variable cost on per unit remains same. Samjha? And total variable cost will change with respect to what? Are you clear? So I gave you multiple examples yesterday, and variable cost per unit is constant. What is constant? Per unit. What keeps on increasing? Total variable cost. और कल कुछ बाकी चीजें भी मैंने आपको बोली थी, और ये मैंने एग्जांपल दिया था कि how variable cost per unit remains constant. Total variable cost goes up. चलिए, आज हम अगले कॉस्ट की तरफ जाएंगे. Are you willing to listen, learn? हाँ? नहीं, मैं रुकने वाला नहीं है. तुमको लगता है क्या? क्योंकि अगर रुकना होता तो मैं टीचिंग छोड़ देगा. अगर रुकने का है तो छोड़ देंगे ना. रुकने का नहीं है अपने को. बहुत सारा बच्चा जिसको जेन्युइन सीखने में इंटरेस्ट है. अभी हम अगला आइटम करता है, बहुत खतरनाक है. फोन पे तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए, नहीं तो फोन पे डाउनलोड पे लगाओ. 200-300 MB का फाइल एक्सेल एप्लीकेशन है. एक्सेल इज एन ऐप. यू शुड हैव ऐप ऑन योर फोन. Microsoft Excel. Yeah, if you have Android, I think Android comes up with the Google Sheets by default. Google Sheets. Acha, already Excel is there. If it is there, it's okay. If it is not there, you can download, provided you have a free data. If your limit is already consumed on hours, then it's okay. Then you just see, you can practice it at home. I'll make you go mad today. Are you willing to go mad? What are we going to learn? Regression. और बोले सर क्या सर मैथ्स में लेके जा रहे हो? नहीं रे, आई विल नॉट एक्सप्लेन यू एनी फॉर्मूला. विदाउट फॉर्मूला यू विल लर्न. गिव द हेडिंग. सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ऑनलाइन पब्लिक, आर यू विलिंग टू लर्न? यस. तुमको पूछा मैं, तुमको पूछा. उनसे भी बात करने दो ना, घर पे अंडे दे रहे.
Semi-variable cost. What is semi-variable cost? A cost which has a fixed component as well as variable component. Both. It has both the component. There is a fixed component, there is a variable component. How, sir? How can there be fixed cost as well as variable cost? Can be. Like electricity, I gave you example yesterday. In electricity, irrespective of your quantity of electricity consumed, irrespective of what? Quantity of electricity consumed, minimum एक बिल आएगा. मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का कुछ तो बिल आएगा ना, उस बिल को हम क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट. कुछ भी हो, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आएगा या आएगा. एक सेकंड, अभी तक एक्सेल खोलने की जरूरत नहीं, बंद करके रखो, आने को टाइम लगेगा ना कंसेप्ट पे. आज तो आएगा लेकिन. जस्ट अ सेकंड सुरेश, एक मिनट. सो दैट मिनिमम एलिमेंट ऑफ electricity bill which will be there, we call as what? Fixed cost. और फिर per unit basis पे आपको pay करना होता है. That is variable element. So very simple example of a semi-variable cost. There are many costs which have this element. Irrespective of quantity produced, something is going to be incurred. And depending on quantity produced, some additional amount is going to be incurred. How do we identify it? But how much is fixed element and how much is variable element? वो identify करने के लिए there is one low IQ level method and one high IQ level method. In examination, only low IQ method will be accepted. High IQ will not come in next 50 years, but I will teach you. It is there in the book of the institute. It has not come. बहुत खुश हो जाएगा मेरा दिल अगर वो पूछ लिया तो. So semi variable cost. कितने बच्चे हुए इसके? Variable cost and what? Fixed cost. There is a variable element and there is a fixed element. समझा? Identify करेंगे ना. What we need to identify out of the semi-variable cost, how much is fixed, how much is variable. आप बोलेंगे, why do you need to identify? I need to identify because I need to make up budgets thereafter. What I need to do? Budgets. Like right now this year I produce 5,000 units. Next year I plan to produce 7,000 units. If I produce 7,000 units, what will be my cost? If I want to make a budget, I need to know out of my cost how much is a fixed cost and how much is. Because from 5,000 to 7,000 if I go, assuming there is no change in capacity. कहाँ पे बोला मैंने capacity change? Did I say? How much I am producing right now? 5,000. How much I plan to produce next year? Assuming there is no change of capacity. 5,000 to 7,000, what will remain same? Fixed cost. What will change? So there are certain costs which have element of both. It is very, very important for anyone to identify in a business what is my variable cost and what is my fixed cost. So far this problem did not come because so far we were discussing a cost which was entirely fixed or entirely. Now I am talking about a cost which has features of both variable as well as. So लिखो, how do we identify? How do we identify whether cost is variable? Give a title. How do we identify whether a cost is variable or fixed or semi-variable or what? Semi-variable. How do we identify? Bachcho, there are two things. First, we need to identify what type of cost it is. And once we identify what type of cost it is, then we need to do the segregation. Segregation of what?
Segregation of semi-variable cost. You don't need a segregation of fixed cost. Why? There are no two components. Fixed cost has only. Which cost has a two component? So what do we need to do? देखो अब मैं क्या लिख रहा हूं. मैंने एक कॉलम लिखा जहां पे मैंने लिखा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी, और मैं यहां पे कॉस्ट लिख रहा हूं. कुछ तो कॉस्ट है. दिस कैन बी रिपेयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट, इट कैन बी सैलरी, इट कैन बी इंश्योरेंस, इट कैन बी इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इट कैन बी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एनी कॉस्ट. कॉस्ट डॉट 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 मतलब अमाउंट नहीं है. एनी कॉस्ट. I have just written what? Quantity produced, and I have written what? Cost. So I take different quantities. 1000, 1200, 1400, 1500, 1800, ऐसे अलग अलग quantities ले लिए मैंने. I just considered different quantities. Okay? अरे yes, no? Yes. All the quantities that we are considering should be within same capacity level. There is a capacity of a factory. Yes. Majority of the businesses have capacity limit. There are very few businesses which have no limit. You can just go on and on selling more because these are platform businesses. Basically softwares. So you create a software once, like Facebook. Is there any limit of number of users on Facebook or Instagram? No, जितने चाहे उतने लोग आ सकते हैं. They just need to keep on adding what? सर्वर. फेसबुक का जो सॉफ्टवेयर है या जो एल्गोरिदम उन्होंने बनाया होगा तुम्हारा दिमाग खत्म करने के लिए, जो एल्गोरिदम फेसबुक ने बनाया वो एल्गोरिदम सेम है. सेम एल्गोरिदम वर्क्स ऑन अमेरिकन फेलो, सेम एल्गोरिदम वर्क्स ऑन अ पाकिस्तानी एंड किल्स एवरीवन. टुमारो, दोज हु आर नॉट वॉच्ड, प्लीज वॉच सोशल डायलेमा टुमारो. संडे है, छुट्टी है. सोशल डायलेमा करके एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री 1-1.5 घंटे का देखो. परसों से इंस्टाग्राम तुम्हारा बंद हो जाएगा. जो भी पब्लिक है, इंस्टाग्राम इज मोर डेंजरस देन द दारू. इट इज अ न्यू एज दारू. सो देखना, ठीक है. देयर आर वेरी फ्यू बिजनेसेस व्हिच आर प्लेटफॉर्म टाइप. मेजॉरिटी बिजनेसेस हैव सर्टेन कैपेसिटी लिमिट. डू यू एग्री विथ मी? तो ये क्या है रे? अलग अलग क्वांटिटी प्रोड्यूस ले लिया मैंने. And I write a cost. I'm not writing amounts here. Imagine there are amounts here. I have quantity, I have cost, and I have to decide, is this cost variable or is this cost fixed or is this cost? First decide what type of cost, and then the next question comes up. If it is semi-variable, how do I split? Do not mix two questions. Which are the two questions? पहले आइटम को पूछने का, हे आइटम, what type of item are you? If item has both the features, then that is variable and fixed. Then only you think of splitting it. Otherwise, do not split. Okay? चलो, कोई guess कर सकता है कैसे decide करेंगे हम? Whether it is variable, fixed. You wanna give a try? एक सेकंड बिफोर आई कम डाउन. ये जो कॉस्ट है ये क्या है? दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ दैट आइटम. सी कॉस्ट कौन सा हो सकता है? दिस कैन बी इलेक्ट्रिसिटी, दिस कैन बी इंश्योरेंस, दिस कैन बी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. ऐसा एक एक आइटम है. अरे दिस कैन बी मटेरियल, दिस कैन बी लेबर. different costs which are recorded in your financial statement. अलग अलग कॉस्ट है मेरे पास. हर एक कॉस्ट के लिए अलग अलग कॉलम बना सकते तुम. इमेजिन यू हैव एक्सेल शीट. फर्स्ट कॉलम इज व्हाट? क्वांटिटी प्रोड्यूस. और इफ यू वांट इवन मोर फैंसी, आई से मंथ, Jan, Feb, March, April, May, like this, so on. Raw material cost, blah 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 blah. Wages, blah blah blah. Advertisement, blah. Electricity, blah. Insurance, blah. Rent, blah. So like this, I have written what? Different months or different years, and I have written a cost. But if you take different years now, you know what is the problem? Inflation.
नॉर्मली विद इन द सेम ईयर इंफ्लेशन का इंपैक्ट उतना नहीं आएगा, उसका भी इंपैक्ट रहेगा प्राइस लेवल चेंज का। हम प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ आई वांट टू डिसाइड वेदर द कॉस्ट इज चेंजिंग विथ क्वांटिटी और नॉट। मेरे को डिसाइड क्या करना है, कॉस्ट वेरिएबल है या नहीं है। तो अलग अलग कॉस्ट है, सुन लो। हाँ, तू बोल रहा था कुछ बेटा, हो गया ना? सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक से सुनना। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक से सुनना। एक कल का वो आयुष सोया था, उसने मैसेज किया, हाय आयुष। वो बोला सर मेरा सर दर्द हो रहा था, 11 घंटे लेक्चर सुन रहा था इसलिए मैं सोया था सर। थोड़ा टाइम सुनने मतलब एडजस्ट होने को लगता है, बट इट्स ओके, इसका मतलब सोने का नहीं। व्हाई? यू आर नॉट गोल्ड ना। सो लिसन अप केयरफुली, लाइन बोल रहा हूं, ठीक से सुनना, बहुत ठीक से सुनना, लिखना मत। इफ विथ चेंज इन क्वांटिटी total cost is not changing, it is a fixed cost. If the quantities have changed but this total cost has not, it is fixed cost. बच्चों, fixed cost also changes due to price level. That is why I had taken different periods of short term. In a short term, impact of inflation will not be substantial. Even if it is there, it will be small impact. Repeat line. If with a change in quantity, total cost is not changing. Then what is it? Very good. Samjha? Then do the next thing. Calculate cost per unit also. How do I get cost per unit? This total cost divided by quantity produced. If cost per unit is remaining what? Same, then it is a variable cost. कुछ समझा क्या? And if it is neither of the above two, it is a semi variable cost. Bouncer, bouncer. क्या टाइटल लिखा आपने? How do we decide whether cost is what? Fixed or variable or first? If the total cost is remaining with reference to change in quantity, it is. If per unit cost is remaining same, it is variable cost. If it is none of the above two, semi variable. लिखो अब, ये टेबल तुमने लिखा था ना, लिखिए। If total cost is remaining same, if total cost is what? Remaining same, even with change in quantity, even with the change in quantity, then it is, बोलो, fixed cost. Then it is fixed cost. Full stop. समझा? अच्छा लिखती रह तू। If per unit cost is remaining same, if per unit cost is remaining same, then it is, बोलो, variable cost. If a per unit cost is remaining same, then it is variable cost. कुछ समझ में आया क्या? Next line. If it is none of the above two, if it is none of the above two, it is semi-variable cost. Note. नीचे note लिखो. Note. We have assumed same price level for different quantities produced. We have assumed same price level for different quantity produced. तो मैंने ऊपर कॉलम क्या किया? क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ना.
कॉस्ट के लिए प्राइस लेवल जो है वो हमने क्या अज्यूम किया है, सेम, बिकॉज इफ द प्राइस लेवल हैज चेंज्ड ऑब्वियसली कॉस्ट विल चेंज ना यार, देन फिक्स कॉस्ट विल ऑल्सो चेंज ना. नोट, वी हैव अज्यूम same price level for different quantity produced. Do you understand? Ritika is saying, sir, textile industry also has no limit na? No, there is a limit. मैंने बोला ना capacity के ऊपर. There are very few businesses where once you build a product or once you build your idea, there is no limit on how much you can produce or how much you can sell. Textile, there is a limit, beta. In textile, there is a spindle using which you process particular fabric or you make a yarn out of it. So there is a limit of particular machinery setup, how many meters of fabric that you can process. Manufacturing के सारे businesses में capacity का limit आता ही है. ये जो capacity का limit नहीं ना, ये normally software या service industry को होता है. Let me give another example. I repeat the line, yesterday's line. You should find out the business which gets better with size and not worst. Let me give you a classic example. HDFC Bank, or you can pick up any bank. Matlab, I like HDFC, that's why HDFC. For HDFC का shareholder नहीं है. HDFC will be very good buy. Little market correction के बाद HDFC will be a good buy to go for. I'll let you know at that point of time. या कभी अलग से session लेके आपको how do you analyze banking and finance industry? I'll let you know. Point आएगा, एक 2-3 महीने के अंदर आ सकता है. Listen to this. HDFC बैंक है, उसने एक नया ब्रांच सेटअप किया. That new branch has 1000 square feet area. 1000 square feet का rent is equal to, let's say, 1,50,000 per month, per annum 18 lakh rupees rent. So 18 lakh becomes their fixed cost. Electricity bill per annum 3 lakh. 21 lakh हो गया total. 18 plus 3. Salary of the staff 20 lakh of that particular branch. Fixed cost 41 lakh plus 9 lakh other. Annually 50 lakh. For example, it can be more, it can be less. Once I set up, you will go mad. Huh? Once I set up a branch and I have committed to incur 50 lakh rupees. My friend, there is absolutely no limit on that particular branch how much revenue it can generate. How does a bank generate revenue? By giving loans. Now, just because a branch size is 1000 square feet, is there any limit on the amount of loan that the bank can give? If tomorrow one customer walks in and he wants a loan of 20,000 rupees, will bank give? Yes. Another customer walks in, he wants a 20 crore loan, will a bank give? Yes. So banks' loans that will be disbursed has no limit, nothing to do with what? The fixed cost of the bank. Practically there will be limit. How? It will not be any amount of customers because that branch in a particular location will get the people only from nearby area. You understand? You have a branch in, let's say, this 𝗙𝐓𝐴 Pune. You are not going to get a customer from somewhere in Kolkata. So there is a limit, but as far as this area is concerned, there is no limit. With the fixed cost, with the same 50 lakh rupees of cost, HDFC Bank can give loan of 5 crore, 20 crore, 200 crore, 400 crore, assuming that area has that much of potential. So what does it mean? That banking business, as it kept on giving more and more loans, fixed cost did not jump up. Fixed cost remained. Obviously, year on year, salary increase will be there. So fixed cost will, because of what? Inflation. ये सीए कोर्स में है ही नहीं ये कंसेप्ट. हमारे सीए कोर्स में बच्चे को कभी भी पूछ के देखो, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स. Boss, fixed cost also changes due to what? Price level. That's what example I had given yesterday. Almost 80% of you had gone wrong. Inflation दिया था ना मैंने. So there is a change that will happen. Okay. So question is, how can none of the above become semi-variable cost? That's what. If a cost is not fixed cost, if a cost is not a variable cost, then what is it?
then we call it as a semi-variable cost. It is other than the above two. But there is some fixed element and there is some variable element. You have to always check per unit if it is constant. Cost per unit if it is, then what is it? Variable cost. If the total cost is remaining constant, then it is fixed cost. Do you understand? क्या हो गया पेंसिल को? If total is remaining same, I call it as a fix. If the per unit is remaining same, I call it as variable. Other than the two, I call it as what? Semi-variable cost. This is Indian method. अबे डरना मत, लेक्चर होगा. नहीं, this is an app problem for sure. नहीं, आपका नहीं है. अरे just a second. It's a pencil issue. So we have to first check whether the cost is changing with quantity. If it is not changing with the quantity, it's fixed. If it is changing with quantity but per unit is remaining, then it is. And all other cases, we by default put it into semi-variable. We put it into semi-variable. All other cases. Are you clear? Now the next question, how do we segregate semi-variable cost? अब तक मैंने क्या question पूछा था? How do we identify whether the cost is variable or fixed or semi-variable? So, this is not decided on total of all costs. This is decided cost by, I am not taking total of all the costs. I am going cost, नीचे लिखो. Above analysis is not done for total of all costs put together. Above analysis is not done for total of all costs put together. Above analysis is not done for total of all costs put together, but it is made for individual cost. It is made for individual cost. Examples of semi-variable cost. Example of what? Semi-variable cost. Examples of SVC, semi-variable cost. Number one, electricity. Electricity is a classic example of what? Semi-variable cost. It has a fixed element. और per unit भी constant नहीं रहता. Per unit मतलब not electricity का per unit, per unit of finished goods that you have produced, per unit of your cost object. Electricity is remaining, मतलब एक fixed element होता है, and then there is a variable element. Number two, electricity हो गया. Repairs and maintenance expenses. Repairs and maintenance expenses. Another classic example of semi-variable cost. Why? You have to do some basic repairs and maintenance irrespective of whether a production is carried out or not. Machine का repairs maintenance करना ही पड़ता है. Like your vehicle. Whatever happens, quarterly आपका उसको servicing करना है, for example. And if you are driven the vehicle for more kilometers, you have to change engine oil quickly. So like in a machine, whether machine is used or machine is
Not use, you have to do the maintenance of machine. That is a fixed element. And I use machine for more hours. I have to put more oil or more lubricants for that machine, or I have to change certain parts of a machine which are consumable parts. That becomes what? Variable cost. समझ रहा है क्या? Let me give another kick-ass example. Salary of salesmen or sales staff. और बोलेंगे हैं? Salary of sales staff, normally whatever is your sales staff, आप उसको fix commitment देते हो. Whatever happens, you will get 30,000 per month. But if you make a sales, you will get a 1% of sales, 2% of sale, 0.5%, 5%, whatever, case to case. So there is a fixed element in a salary, plus there is a variable element in salary. I hope you understood that auto rickshaw fare. वाह रे वाह, क्या लेवल है. Auto rickshaw fare is an example of semi-variable cost. Why? The moment you sit in the auto rickshaw, there is some, what is the minimum meter nowadays? 25. Minimum. The moment you sit in the auto rickshaw, you have to pay 25 rupees. Thank you, Ayush. क्या example है? Business में, okay. Why are you going to analyze auto rickshaw fare? There are certain costs where we should not spend a time also on analysis. We should just ignore. Too much of analysis is a paralysis. But ठीक है, your auto rickshaw fare is a classic example at your level. It is a, इधर मैं सेल्स के स्टाफ का बात कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, मेंटेनेंस का एग्जांपल दे रहा है. ठीक है, ऑटो रिक्शा फेयर. एग्जांपल्स हो गए. अब हमें करना क्या है? सेग्रीगेशन करना है. मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन. मेथड्स ऑफ व्हाट? segregation or separation. Methods of separation of what? Methods of separation of semi-variable cost. ठीक है, सुन लेना. Let the entire concept be over. Do not interrupt in between. How much of cost is fixed? How much of cost is variable? First method is no mathematics. It says do the scrutiny of invoices by supplier. Like there is no what? No formula in the first method. First method says whatever suppliers have given us invoice for electricity or for maintenance expenses, or you do analysis of your vouchers. So it is analysis of vouchers. Vouchers, documentary evidence supporting a transaction is known as what? Voucher. So every transaction that you record or every, ओए कुछ कर मत यार, इलेक्ट्रिसिटी के बटन्स को तुम हाथ मत लगाते जा रहे. यहां पर जो बटन बंद किया वो चालू कर. क्या हो गया अभी? कुछ ट्रिप हो गया ना कल का ऐसा? अरे हेलो हेलो, ऑडियो तो चल रहा है. सो एनालिसिस ऑफ वाउचर्स. You analyze vouchers. What will happen by analyzing vouchers? You will come to know. There is no technique. There is no answer. Maths कुछ नहीं है. You go through the vouchers and look at the various vouchers. अच्छा है. This much cost is looking to be fixed. This much cost is looking to be what? Variable. So you decide by analyzing voucher. There is no formula. Nothing. This method will never come in the exam. Why? They have to give you vouchers. How will they give vouchers? Next, now I am doing a low IQ method. What is a low IQ method? High low point method. दिमाग बाजू रख के सीखना है मेथड. डैश लो IQ. लो IQ डैश सिंपल मेथड.
It's very simple. Dash VIMP for exam. This is the only method that will come in exam. नाम क्या है? High low point method. So in this method, you have quantities and you have cost. Respective cost, repairs, maintenance cost है. Then what? Salary है, insurance है, electricity है, whatever be the cost. For every cost, which is semi-variable in nature, insurance will not be semi-variable, insurance will be generally fixed. So you take quantity, you take what? Cost. Different levels you consider. We are going to ignore all mid levels. We are going to find a level where quantity is highest, and obviously cost should also be highest. I have not come across with any business where quantity goes up and the total cost comes down. Per unit can come down because if there is a fixed cost. कभी ऐसा हुआ क्या? I produce more quantity and my cost has come down. Is it possible? Anyone knows any such business? Please let me know. I will blast you off. That a business where you produce more and the cost of production comes down. It is not possible. So we find out high level, assuming the data was in ascending order, and this will be what? Low level. All in between levels, we say bye-bye. Do not ask why. It is to be done. This you have done in the foundation also. So what we are going to say, for example, high level is 2000 units. Low level was 800 units. At 800, what was the total cost? Total cost was, let us say, 2,40,000. And at a high level, let us assume total cost is 3,90,000. So ask a first question. ऊपर पे देखो मैंने लिख के दिया था. How do we identify? पहले क्या लिख के दिया था देखो. If cost is remaining same on total basis, it is fixed cost. Check करो. Is it remaining same on total basis? This is a particular cost, but so this analysis is not done for all the costs put together. This analysis is for individual cost. समझा क्या? तो ये repairs maintenance का खर्चा है. Assume करो. My quantity produced has gone up. Cost has also gone up. That means it is not fixed cost. This is not a fixed cost. Ask a next question. What is the next question? Cost per unit. How do you calculate cost per unit? Cost per unit. 300 it was. Then how much is it here? 195. What is the moral of the story? It is not same on a per unit. That means everything is not fixed. There is something fixed and there is something variable. We have to identify how much is fixed, how much is. Do you understand? I told that with increase in quantity, your total cost will never ever come down. यहाँ पे एक मैडम है, रितिका. She is saying, sir, manufacturing cost comes down if fixed cost is very high. Another one, airline industry, cost comes down if plane flies at a maximum capacity. Mata, total cost doesn't come down. Plane ka capacity is 400 passengers. If there are 200 passengers, total cost which is there is X. If now there are 300 passengers, total cost will be X plus something. It will not be. Per passenger cost will definitely come down. I am not talking about per passenger cost. Did I not explain this? So cost और ये क्या है? ये total cost है. कौन सा वाला? एक second. Total cost ही नहीं लिखता मैं. Total repairs and maintenance cost. This is total repairs and maintenance cost. So
Is it same on total basis? No. Hence no fixed cost. Is it same on per unit basis? No. Hence it is not a variable cost. If it is not a fixed cost, if it is not a variable cost, if it is not a fixed cost, not a, then what kind of cost is it? Semi-variable cost. Do you agree? How much is variable? How much is fixed? Do I know right now? Do I know right now how much is fixed? How much is variable? No. Can we get it? Yes. So under this method, Atul varti hai. Under this method, variable cost per unit is as under. Variable cost per unit is as under. How do I get a variable cost? Change in total cost. Change in total cost divided by change in quantity. This you have done in the CA foundation also, maybe. So we just took 2 points. Change in cost means what? Change in cost from low point to high point. How much is change in cost? 3,90,000 minus 2,40,000. This is what? Change in cost divided by what? 2,000 minus 800. Did you get it? So change in cost divided by change in quantity. This is assumed to be variable cost. कर लो. कितना है? 125. वो ट्रिप हो गया देख किधर तो इलेक्ट्रिसिटी. वो फैन रेगुलेटर बंद कर ले. वो रेगुलेटर को कौन सी इसको टच किया तो बोल दिखा उसको. वो रेगुलेटर इलेक्ट्रिशियन को दिखा ले कुछ तो ट्रिप हो रहा है उधर. बंद कर उसको और वो वहां पर डाउन हो गया होगा. ठीक से तेरे को मालूम है तो ये हाथ लगा. तू भी शॉर्ट हो जाएगा, हमको भी शॉर्ट करेगा. सो 390 माइनस व्हाट? 240 डिवाइडेड बाय दिस. कितना है रे? एग्जैक्ट. सो वी से 125 इज व्हाट? Variable cost. Do you agree with me? 125 is a variable cost. How much is a fixed cost? We will calculate. Once you get a variable cost, substitute that variable cost at either low level or high level. You substitute a variable cost at either low level or at high level. Wherever you want to substitute. Tell me, what is the total cost at कौन सा level पे substitute करना है तुमको? कोई भी सब्स्टिट्यूट करो आप, आंसर विल बी सेम एट 800 यूनिट्स लेवल. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? अरे बोलो ना बच्चों. टोटल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस, हाउ डू आई गेट वेरिएबल कॉस्ट? क्वांटिटी इनटू रेट. वी हैव ऑलरेडी गॉट अ वेरिएबल कॉस्ट. Bachcho, this is not necessarily the exact answer. This is different methods will give you different answers. It's an art, I told you. There is no one answer. Because when I'm going to change a method, answer will be different. Plus what? Fixed cost. Tell me, how much is the total cost at 800 level? 2,40,000. So I'm going to say 2,40,000 is equal to 800 into 125. How come 125? Variable cost is taken as 125, na? Plus what? Fixed cost. Can we find fixed cost as a balancing figure? Yes. Find out fixed cost as a balancing figure. 1 lakh? 1,40,000. What is 1,40,000? Fixed cost. Total fixed cost, obviously, not per unit. Now, 1,40,000 is a fixed cost, na? Are yes, no? Yes. Do you wanna go mad? Yes. Take on your calculator. How much was the total cost here? 300. How much is 190? You know how this 300 got? Variable is 125 plus fixed cost per unit was 2,40,000. Sorry, fixed cost कितना निकाला हमने? 140 निकाला ना?
Observe. Do you wanna go mad? 140 divided by 800 करो. 175. That 125 and 175 is equal to 300. Let us do it here. 195 के दो बच्चे पैदा करो. कैसे बच्चे पैदा करेंगे? वेरिएबल बच्चा तो 125 रहेगा. Variable cost will be 125 only. Fixed cost will be 140 divided by how much? 1200 na re? Oh, sorry, my mistake. 2000. So बच्चों, why did the total cost came down? कितना है? 70? 70 ना? Total cost came down from 300 to 195 because of the more quantity was produced. As more quantity was produced, fixed cost got spread on more quantity. Yesterday I gave you example. Which example? Phenolics cables. Phenolics cable had a huge capacity which is capable of being used. They had set up the multiple plants. उनके हर एक plant में capacity का balance था, and there was a scope of that capacity being utilized in the time to come. Listen, yesterday I gave you example of Phenolics cable. Phenolics cable के केस में क्या हुआ था? They had a spare capacity. And there was a potential to use spare capacity in the upcoming period. So when the spare capacity got used or got utilized, there is capacity utilization क्या हो गया उनका? बढ़ गया. The moment capacity utilization went up, fixed cost per unit comes. Fixed cost per unit comes down. Profit goes. Profit आपने कल देखा था, almost double हुआ था profit. कहां पर? कहां पे दिखता है? अब तक तो इंस्टाग्राम छोड़ के थोड़ा स्क्रीनर पे गए होगे, थोड़े थोड़े तुम लोग, थोड़े थोड़े. हाँ, पूरे नहीं जाएंगे उधर, हवस के लिए जाएंगे उधर. Phenolics cables quarters में जाके देखूंगा मैं. If you see in that particular quarter, the profit, operating profit, which was at 93 crore, almost double नहीं हुआ, but it went up. Why did it went up? Capacity utilization improved substantially at operating. नीचे का वो अलग रहता है, that is आगे explain करना है मुझे. It's basically what you need to understand is, if your capacity, if your quantity produced jumps up, fixed cost per unit comes. How much is fixed, how much is variable? We calculated right now by using which method? High-low method. Under high-low method, we ignore all in-between values. We ignore all in-between values. Why? Why? मतलब why क्या? We ignore. We ignore. That is a method. This is a simple method. It is used not only by institute. Many people around the world use it. Why? It allows you to do quick calculations. It's very simple ना यार. तुमको भी समझा ना? तुमको समझा मतलब सिंपल ही होगा ना? अब देखो तुम, अगला मेथड रिग्रेशन लगने वाला है इसमें. रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूज करके इसको. Anyone has a doubt on the high low point method? So what do we do under high low point method? We consider one low point, we consider one high point. We calculate variable cost. How do we calculate variable cost? Change in total cost upon what? Change in quantity. This gives us variable cost. And once you get a variable cost, substitute that variable cost in either high point or low point. Right now, where did I substitute? Low point. You wish to substitute in high point? Substitute. Your answer will be same. Even if you, मैंने यहाँ पे substitute कहाँ पर किया बच्चों? 800 पे substitute किया ना? You wish to substitute at 2000? It's okay. Do it. Answer will be remaining. Method 3. Least squares method. This was there in maths of CA Foundation, 11th standard maths, 12th standard maths. Don't expect it for exam, so I'm not going to give you the formula. I'll explain you logic and I'll show you Excel calculations. Formula, if anyone wants, I'll share. But
That will be bouncer for many, because you have forgotten or you never tried to understand what was regression. How many remember regression? Regression chapter skip किया था. It's okay. ठीक है. I'll explain without formula. एग्जाम में ऐसे भी आया नहीं, बट आ गया तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. So listen up to this. Overriding commission can be semi-variable cost, sir. Overriding commission is a variable cost, बेटा. मैंने क्या लिखा था? Salary of sales staff is what? Semi-variable, because there is a fixed component and there is a variable component. Overriding commission in CA foundation, you would have learned consignment chapter. That overriding commission has only variable part. For a cost to be semi-variable, there must be certain fixed element and there must be certain variable element. Both the elements should be there. Overriding commission is only variable element. Total salary which you pay has some fixed element and has some variable element. So lobby. What is the least squares method? It is basically nothing but equation of a line. 9th standard maths is what I am explaining to you now. Let us take x-axis is quantity produced. What is on x-axis? Quantity produced. What is on y-axis? Cost. कौन सा cost? Repairs, maintenance cost, maybe salary cost, maybe any cost, whatever cost. So y-axis is a cost, x-axis is what? Quantity. Am I going to take only 2 points? No, I'm going to take multiple data points. And as you observe, ये क्या कर रहा हूं मैं? आप बोल रहे ये क्या दिख नहीं रहा है? डॉट डॉट तुमको अगर दिख रहे होगे ना, छोटे छोटे डॉट डॉट्स है. इसको आपने क्या बोला था? स्कैटर डायग्राम. बच्चों, क्वांटिटी प्रोड्यूस कैनॉट बी नेगेटिव, सो अदर क्वाड्रेंट्स आर नॉट पॉसिबल. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट. दोज हु हैव फॉरगॉटन, ये 4 क्वाड्रेंट रहते हैं. 1, 2, 3, 4. In case of a quantity and cost, we teach from basics, huh? In case of quantity and cost, it can be, all points will be only in first quadrant. So what is this? Quantity and cost का मैंने क्या किया है? Diagram draw किया है. कौन सा diagram? Scatter diagram. This is called as a scatter diagram. समझा? There is no pattern that is visible. If it was a fixed cost, point should have been like parallel to this. If it was a green color, it would have been fixed cost. Fixed cost is parallel to x-axis. Huh? If it is a variable cost, total variable cost should have gone up. It should have been like this. Right now it is nothing. Do you understand? Yes, right now it is nothing. So right now points are scattered all over the world. World nahi, first quadrant. It is scattered all over the first quadrant. माते थोड़ा दरवाजा बंद करेगी? So points are scattered over the first quadrant. What do we do now? We need to find how much is a variable cost and how much is fixed cost. Listen very, very carefully. How do we identify? We try to draw a line which will go through majority of the observations. These points are mathematically known as what? Observations. कुछ समझ रहा है क्या? These points are known as what? तुम लोग जरा शक्ल स्माइल तुम्हारा कुछ तो हंस नहीं, दांत नहीं दिखाने को बोला मैंने.
There's a difference between smile and दांत दिखाना. So, I want to draw a line which goes through majority of all the points. Possible है क्या? नहीं. Because points are not linear. It will become something. Anyone can guess what is this shape? You cannot. So, we try to draw a line. It is called as a line of best fit. Best fit means we try to draw a line in such a way that points on the line and actual points, the gap between them should be lowest. Points on the line and the actual points are these white color. Point on the line are this green color. The gap between green points and white point should be as low as possible. But problem क्या है? The problem here is some points are above line, some points are below line. So if you try to find a gap, gap will be sometimes positive, sometimes gap will be negative. So in a CA foundation, you would have learned for a negative value, if I do the square, I'll get a positive value. We are not interested in the sign of the gap. We are interested in the gap. तो हम क्या करते थे? उसका square करते थे. This is what you did for standard deviation. बेटा मेरे को याद है. मेरा मैथ्स खराब नहीं है, मेरे को मत बोल. So we tried to take a square and we try to draw a line in such a way that the gap is minimum. That is why we give the name least squares method. Now ये line जो है, यहां से आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिल गया. हाँ बोलेंगे है क्या आदमी बात कर रहा है ये? हाँ, if you draw a line like this. बच्चों, what is x axis? What is y axis? Go back to school. Have you gone into school? Yes. Which standard you are in right now? 9th standard. This line, when it intercepts y-axis, this is known as y-intercept. This is known as what? And then there was a slope of the line. This is known as what? Slope. What is a slope? Slope is change in y-axis for 1 unit change in x-axis, which is nothing but delta y upon delta x, if you know the line. Change in which axis? Y. For every 1 unit change in x-axis. If anyone has tried to understand, this y-intercept is nothing but fixed cost. In that semi-variable cost, जो भी cost है, see, this is semi-variable cost. Why? Variable cost always starts from origin. Bouncer. If it is a graph of what? Variable cost. This is a graph of variable cost. This is total variable cost. Always from origin. Yesterday I did not purposely draw it correctly because I did not want to explain yesterday. If you remember, total variable cost मैंने कल गलत ड्रॉ किया था पर्पसफुली किया था. टोटल वेरिएबल कॉस्ट से गलत है कल का ग्राफ. क्यों? इट शुड लॉजिकली स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन समझते ना? थैंक यू. सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज दिस ग्राफ. व्हाट इज दिस ग्राफ? दिस इज सेमी वेरिएबल ग्राफ. हाउ इज इट अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ? Just apply a common sense, bachcho. Just apply sheer common sense. This is y-intercept. This is what cost? Fixed cost. How come it is a fixed cost, bachcho? Even at a zero quantity produced, there is some amount of cost. So even at a zero quantity, you are incurring certain cost.
has to be what? Fixed cost. Has to be fixed cost. And then for 1 unit change in what? X-axis. If Y-axis is changing, we call it as what? Variable cost. So this slope is nothing but variable cost per unit. Slope is not total variable cost. Slope tells you what? Change in Y, that is cost, for 1 unit change in quantity. So slope का मतलब क्या है? Variable cost per unit. And intercept का मतलब क्या है? Fixed cost, total fixed cost. Are you getting it? Yes. So basically what you need to do is, this was 9th standard equation. You called it as y equal to mx plus c, or some people might have called y equal to ab plus c, या x किया होगा, a plus bx किया होगा तुमने शायद, whatever, depends है risk. There is no, it's a convention. ये जो constant term रहता है ना, it is called the y-intercept. This is very, very important for becoming a chartered accountant, because you are going to require this again in the CA final. You are going to require this again in the financial management. I should not lie to you कि you are not going to require this ever. That is lying to you. Why? अभी demo है ना. I should encourage you to do it by telling you fake things. And then later on, तुम बनते हो CA नहीं बनते हो, मेरे बाप का क्या जाता है? पैसा तो तुमने दे दिया होगा ना. That's what secret of teaching industry. लिख के रख गई तो book बनेगा. So you just need to understand ये line जहां पर intersect करता है किसको? Y axis को. That is your fixed cost. क्योंकि 0 पे भी वो cost है. And then 1 unit change in X axis जो cost आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? Variable. So this method is much better as compared to high-low for a very simple reason. You are not considering one data point. You will have to consider multiple data points over multiple periods. Multiple data points you consider. Multiple, आपके पास क्या होना चाहिए? X-axis quantity produced, blah 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 blah. Cost, blah 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 blah. अब आप बोलेंगे sir multiple periods if you take, price level will change. Remember, price level adjust करने के लिए you can always do. For example, I say base year inflation index was 100. Today's inflation index, consumer price index, CPI बोलते हैं. This is what was there in your CA foundation. Today's CPI is 143. Today's cost is rupees 12,50,000. So what you can do? Every cost of today or 1 year ago or 2 years ago or 3 years ago, you can convert all the costs to the base level. That is what I dictated. ये बहुत खतरनाक point लिख के दिया था मैंने. For above, we assume price level to be constant. For above analysis एक line लिख के दिया था देखो. For above analysis, we assume price level to be constant. So 12,50,000 I will do question mark and we convert. This concept you people have learned in economics also. Which economics? National income chapter, in case you learned by mistake. There is something called as a nominal GDP of a country and there is something called as a real GDP of a country. Nominal GDP is at a current price level and real GDP is at a base year price level. तो आप क्या करते हो? Current price level को आप क्या करते हो? Base year में convert करते हो. बोलो, how much? 8 lakh 126. So if you want to identify how much is a variable, how much is a fixed cost, what do you need to do? On your screen, month, January 2012, Feb 2012, so on and so forth, December 2022. I have got data of 11 years. 12 to 22, 11 होता है. 12 also included, 22 also included. 11 years, 12 months, 132 months. 132 महीने लिए मैंने. Next,
रिपेयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट, ब्ला 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 ब्ला। आ गया? ये एक्चुअल कॉस्ट लिया मैंने। देन एवरी कॉस्ट यू कन्वर्ट टू द बेस लेवल। कैसे? इन्फ्लेशन इंडेक्स अवेलेबल होता है। अब बोलेंगे कहां से इन्फ्लेशन इंडेक्स अवेलेबल होता है? यू शुड हैव द डेटा, और गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री है विच प्रोवाइड्स इन्फ्लेशन इंडेक्स, मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन अ रियलिटी। मोस्पी का डेटा रहता है, वहां से आप क्या करो, इन्फ्लेशन इंडेक्स ले लो, यू कन्वर्ट ऑल द कॉस्ट टू विच लेवल? बेस ईयर लेवल। अरे समझा गया? एंड देन एक बार आपके पास मंथ है, कॉस्ट है, क्वांटिटी भी लिखो। सो यू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मोस्पी, इन इंडिया, दूसरे कंट्री में नाम दूसरा होगा। सो यू हैव डेटा ऑफ व्हाट? different quantities produced and different what? Cost. You have data of different quantity produced and different cost. Once you have this data, can we easily calculate how much is a variable cost and how much is a fixed cost? Yes. How will you calculate how much is a fixed cost and how much is a variable cost? ये जो लाइन है ना, आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा? What is x axis? Quantity. इसके लिए फॉर्मूला तुमने फाउंडेशन में सीखा था. That formula was very dangerous. I'm going to teach you without formula. You will go mad. Cost is on which axis? Y axis. आपके पास कितने क्वांटिटीज है बच्चों? एक है या बहुत सारा क्वांटिटी है? और इधर क्या है आपके पास? बहुत सारे अलग अलग कॉस्ट है. Are these costs remaining same? No. That means it is not a fixed cost. Are these costs remaining same on a per unit basis? No. That means it is not a variable cost. Then it is a... But we have converted all the cost to what level? Base level. We have converted all the costs to... That's why comparison can be done. And now I need to find out what is the intercept. आपने फाउंडेशन में ये x है, ये क्या है? y है. फाउंडेशन में you would have learned a very very deadly formula for this. First, you should calculate. There are multiple formulas. The one which I find easy. Listen to this very carefully. आपको क्या करना है? y मतलब क्या है? Cost है ना? y equal to m. m is a slope. X is quantity plus what? C. What is M? M is variable cost per unit. What is M? I can't hear. What is C? Fixed cost, total fixed cost in that. Anna. How do we get it? There is a formula for M. Once we get M, getting what? C is easily possible. I am explaining you first mathematical process which you are done in CA foundation. If you do not remember or you are not done the foundation, it's absolutely okay. Probability of this coming in exam is 0, but you should know when you go on to do, because this is going to be very very important for understanding finance. It's a basic equation. इसको बोलते हैं regression equation. This M is a regression coefficient. In foundation or 9th standard, you called it as a BYX. क्यों? BYX is Y on X. BYX is used to predict value of a Y if you know value of X. So this is used for a demand forecasting. This is used for analyzing risk involved in investing in a stock, risk of a portfolio. There are a variety of things. अब ये practically exactly work इतना आसानी से नहीं होता है. You'll have to make a lot of changes. But based on this, there is one model called as a capital asset pricing model. You will learn later on in the finance, not right now. So what I need to do? ये M निकालना है मुझे. तो पहले मुझे ये X का क्या निकालना पड़ता था? Average X bar. How do I calculate X bar? Total of X divided by N. I need to get what? Y bar.
है ना, x बार निकाला मैंने, देन आई नीड टू फाइंड m, m का फॉर्मूला है, व्हाट इज m का फॉर्मूला, m, m मतलब क्या है रे, स्लोप, स्लोप मतलब यहां पर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, variable cost per unit will be correlation between xy into standard deviation of y upon standard deviation of x. This correlation will be covariance of xy upon standard deviation of x into standard deviation of y. Covariance of xy is equal to summation of x minus x bar into y minus y bar upon n. Upon n है ना, standard deviation of x is equal to under root of summation of x minus x bar square upon n into y minus y bar square upon n. summation है, इसको ब्रैकेट ओपनिंग वगैरह करके भी आपको सॉल्व करना पड़ता है. Yep, there was one more formula, nx bar. That formula I never remembered in my life. ऐसा डेडली फॉर्मूला है, डोंट एक्सपेक्ट इन द एग्जाम. अब बोले तो हाँ, दिस वॉज देयर इन द फाउंडेशन, आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग ग्रेट, दिस वॉज देयर इन द 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो. ऐसा फॉर्मूला है. फिर आप बोलेंगे हमको आया, आया तो फेल हो गए तुम, क्योंकि तुमको कुछ याद नहीं आएगा, आएगा नहीं, चाहिए तुमको तो मैं फॉर्मूला देता हूं तुमको कोरिलेशन मेथड से. सो ये मेथड से क्या आएगा, m आएगा सिर्फ, आपको m मतलब वेरिएबल कॉस्ट आएगा, आपको फिक्स कॉस्ट भी चाहिए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूं, बिकॉज इसका आगे जाके बहुत यूज है. कॉस्टिंग में आने का डरो मत, आएगा नहीं कॉस्टिंग में, एग्जाम में नहीं आता. मॉड्यूल भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया तो उनको समझा नहीं, तो उन्होंने सिर्फ ऐसा थ्योरेटिकली, ये जो भी मैं थियरी एक्सप्लेन किया उतना ही उन्होंने एक्सप्लेन किया, बस खत्म, आगे आगे निकलने का प्रॉब्लम है ही नहीं उसके ऊपर. आ भी गया प्रॉब्लम तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं. अब एक बार m आ गया और आपको क्या चाहिए, c. व्हाट इज c? c इज अ फिक्स कॉस्ट, है ना, c इज अ फिक्स कॉस्ट. प्लीज हैव पेशेंस. हाउ डू यू गेट c? देयर इज, यू शुड राइट स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन इज y बार इक्वल टू mx बार प्लस c. Now you know y bar, you know x bar, you have calculated m. So once you know x bar, y bar and m, you can find out c. That c is a fixed cost. कुछ समझा? All of this does not require any brain if you are working on a Microsoft Excel. It's a flash of second calculation, will require minutes because your level is low, but we'll do it. If anyone is interested in the mathematical process, I will share the one particular working which I had done earlier. Instead of wasting a time in the class, those who are interested, I'll just show. Wait a second. Just a second, public. If I can find a file, I'll share a file with you which I'm searching. So if anyone is interested in knowing the process, अरे मिल क्यों नहीं रहा यार. Okay. बच्चों को शेयर किया यार मैंने, हाथ से लिख के दिया है, वापस वापस टाइम नहीं जाना चाहिए इसलिए. Just a second. It's there.
I'll show you. If anyone wants it, एक second. You should have joined the Telegram group. I'll share it on your Telegram group also. यार क्या irritate कर रहा है यार ये. एक second बच्चा. पीडीएफ वो क्या है? टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ है या इमेज है? वही मेरे को मालूम नहीं. और इतना सारा चीजें शेयर होते रहता ना. जो चाहिए वो छोड़ के ही सब कुछ मिलता है रे. जब सर्च करने जाएंगे ना ऐसे कुछ, जस्ट अ सेकेंड. यार क्यों नहीं मिल रहा है मेरे को? हाँ मिल गया. चलो, नाम अलग था. ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग. ऑन योर स्क्रीन एक फाइल आ रहा है, ठीक से देखना. प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली. आई विल शेयर द पीडीएफ विथ यू एंड देन आई विल शो यू एक्सेल ऑल्सो. ये आगे जाके कॉस्टिंग में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इसका एफएम में इंपॉर्टेंस है. सीए कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तुमको मालूम नहीं है. ऑब्जर्व. इसको रोटेट करने का ऑप्शन रहता है ना, व्यू सेटिंग्स. रोटेट किधर गया? पहले रोटेट का ऑप्शन था यार इधर. कहां पर है रोटेट? हाँ, वेर इज रोटेट? अरे नहीं वो नहीं. विद इन दिस ऐप देयर वाज अ रोटेट ऑप्शन अर्लियर. आईपैड रोटेट करो बोल रहा है गधा. यार देयर वाज अ रोटेट ऑप्शन यार. दिस पीपल हैव चेंज्ड ऐप सब्सटेंस. ये ऐप अभी अभी बदला है. तुम्हारे जस्ट बैच के पहले बदला है ऐप. स्क्रीनशॉट लेके करो बोल रहे ना गधा. क्या हो गया इसको? जस्ट अ सेकेंड. ये कुछ तो और ट्रबल करना चालू कर दिया इसने. एनीवन नोज? एक सेकंड. नहीं नहीं नहीं, मैं भी इसका बाप हूं. यस, अभिषेक जावरे बेटा. ये आएगा आएगा, रोटेट होएगा, डरना मत. सो देखो, ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग. दिस इज क्रेजी. आई एक्सपेक्ट साइलेंस. आई विल शो यू ऑन एक्सेल शीट ऑल्सो. अलग अलग क्वांटिटीज है. क्या है? क्वांटिटी ले लिए मैंने अलग अलग, कॉस्ट ले लिए अलग अलग. तो मैंने क्या किया? क्वांटिटी का टोटल लिया, क्वांटिटी का एवरेज निकाला. सेम वे कॉस्ट का टोटल लिया, कॉस्ट का क्या निकाला मैंने? एवरेज निकाला. हाँ ना? हाँ है ना? अब देखो, देर आफ्टर आई कैलकुलेटेड एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार. दिस इज अल्टरनेटिव वन विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. ये अल्टरनेटिव वन चल रहा है. दिस इज वन मोर अल्टरनेटिव यहां तक का. दिस इज कोवेरियंस वाला अल्टरनेटिव. दिस वॉज वेरी इजी वन दैट यू डिड इन द फाउंडेशन. अल्टरनेटिव टू अगर आपको आ भी गया एग्जाम में तो पास होने का तरीका सुन लो. जस्ट डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई. दैट इज कॉल्ड एज एक्स वाई. टेक अ स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स रेज टू 2. x raised to 2 is a square of, and then you use a formula. Alternative 2 में एक formula है. Formula is variable cost. Please डिसाइड ही किया मेरे को परेशान करना है. जस्ट अ सेकेंड. प्लीज कॉन्सेंट्रेट.
equation of the line is y equal to mx plus c. In case of a semi variable cost, it will be as under semi variable cost, which is y equal to variable cost into quantity plus fixed cost. I already explained this. Slope is basically regression coefficient. If we want value of y for a known value of x मतलब quantity. If we want value of y for what? Known value of x, we need to calculate slope as by x. Y on by x can be worked out either of the two alternatives. ये पहला अल्टरनेटिव अभी मैंने बोला था, कोवेरियंस अपॉन व्हाट? वेरियंस. कोवेरियंस अपॉन वेरियंस इज वन फॉर्मूला. कोरिलेशन इनटू सिग्मा y सिग्मा x इज अनदर फॉर्मूला. n गॉट कैंसल्ड वेरियंस के अंदर. वेरियंस इज नॉट अंडर रूट, वेरियंस इज आउटसाइड रूट. जिनका मैथ्स खराब है चुप बैठना. दूसरा अल्टरनेटिव, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. आई नो इट इज डेंजरस, बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूं यार. इसके लिए मैं सिखाऊं ना, ऐसा नहीं हो सकता. n डॉट समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर. तो हाँ, ये याद रहना बहुत मुश्किल है. सिंस दिस इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, व्हाट आई डन, ये वाला आंसर लिखा. कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन व्हाट? वेरियंस ऑफ एक्स. ये वेरिएबल कॉस्ट का है. कितना है वेरिएबल कॉस्ट इधर? ये x माइनस एक्स बार ऊपर है, टोटल लिखा हुआ, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार. दिस इज 53.42. व्हाट इज 53.42? वेरिएबल कॉस्ट. अल्टरनेटिव 2 से भी वही आता है. आई विल शो यू बाय एक्सेल शीट ऑन योर फोन. जस्ट वेट फॉर 2 minutes. Once we get by(x), we need to get c, that is y-intercept, as under y-intercept is equal to y bar minus by(x) into x bar. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन. What do we call it as? So y-intercept मतलब फिक्स कॉस्ट है ना. ये बेसिकली मैंने क्या किया, ये कहां से लाया मालूम क्या? y इक्वल टू mx प्लस c था ना, y बार x बार ऐसा लिखा. हमको c ढूंढने का है. c कैसा आएगा? c विल बी इक्वल टू y बार माइनस mx बार. वही तो लिखा है ना, y बार m मतलब by(x) एंड x बार इज x बार. तो मैंने सब्स्टिट्यूट करके आया फिक्स कॉस्ट कितना? 43,276. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ऑब्जर्व नाउ व्हाट आई एम डूइंग. सेम डेटा मैं अभी एक्सेल के अंदर लेके जा रहा हूं पूरा. आई विल शेयर द पीडीएफ आल्सो विद यू. एक्सेल ओपन हो रहा है आपके स्क्रीन पे. सेम डेटा जो है मैं एक्सेल में लेके गया. कुछ समझा क्या? आई विल जस्ट डिलीट एवरीथिंग. अच्छा, ये रीड ओनली. दिस इज तुम्हारा बैच कौन सा है? मई 2024. तुम्हारा बैच का फोल्डर किधर है? फोल्डर नहीं बना है तुम्हारे बैच के लिए? क्या रे? है डरना मत. जस्ट अ सेकेंड. इंटर मई 24 ढूंढो. नहीं है? है ना? इंटर मई 24. सो क्या ना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. जस्ट अ सेकेंड. लेट मी सेव द फाइल एंड देन आई विल डिलीट इट. और ये आपको शेयर कर रहा हूं. जस्ट अ सेकेंड. यू शुड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप if not joined. Delete, clear content. This file I am sharing with you on your phone so that those students who want to do it along with me can do it. It will be आपके फोन पे इसको ओपन करना. M24 कहां पर है? Check out on your Telegram group. Excel file should be there. ये जो टाइप करके आया हुआ सिर्फ क्वांटिटी एंड वाई. जिनके पास नहीं है फोन, जस्ट ऑब्जर्व करना. हाउ डू वी गेट वेरिएबल कॉस्ट, हाउ डू वी गेट फिक्स कॉस्ट. ऑनलाइन पब्लिक, जस्ट टाइप इन अ चैट बॉक्स दैट डिड यू रिसीव द फाइल. टेलीग्राम ग्रुप you should have already joined.
आ गया क्या फाइल? जस्ट आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल टू कंफर्म. फाइल आ गया? ओपन अप दैट फाइल इन एक्सेल. इन केस यू वांट टू डू इट, इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल, you just see what I'm doing. Yes, thank you online public. You can open in sheets or open in Excel. If not, don't do shit, just look at it. देखो, hey public, as quantity increased, did the total cost remain same? That means, is this a fixed cost? Last bench, is it a fixed cost? No. Now let us check, is it a variable cost? How do I check, is it a variable cost? I calculate cost per, please listen, cost per unit. क्या जमाना आ गया जोशी, मेरे को प्लीज बोलना पड़ता है. Cost per unit 68 आ गया. I'll drag it down. ये समझा तुमको? And pest. Did you understand? I dragged it down. How did I calculate cost per unit? Total cost divided by quantity. Basics of sense here. Cost per unit. I dragged it down. Is it remaining same? अरे is per unit cost remaining same? मतलब क्या है? There is some fixed cost and there is some variable cost. कुछ समझा क्या? Am I using high-low method? No. I'm using least squares method. I will show you answer by high-low method also. High-low will give different answer. This method gives different answer. Which one should you use? The one which examiner asks. Is it same fixed cost? No. Is it variable cost? No. There is a semi-variable cost. Are you willing to go mad? Here, look at it. Fixed cost. How much is the fixed cost? Let me identify fixed cost. Let me identify what? Fixed cost. What is the fixed cost? ये इनका अगर हमने स्कैटर डायग्राम ड्रॉ किया एंड वहां से एक लाइन ड्रॉ की, तो वो लाइन जहां पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट को हम बोलेंगे फिक्स कॉस्ट. एवरीवन अलोंग विथ मी. एक्सेल में कोई भी फंक्शन टाइप करना होता है, इज इक्वल टू टाइप करने का पहले इज इक्वल टू टाइप करो. जो कर रहा है वो, जो नहीं कर रहा है वो सिर्फ देखो. दिख रहा है तुमको? लास्ट बेंच फंक्शन है INTERCEPT, इंटरसेप्ट. ऐसे टाइप करने का, इंटरसेप्ट. आर्टिकल शी में बहुत काम में आएगा तुमको. एक्सेल, नॉट दिस फंक्शन. इंटरसेप्ट. अभी वो फंक्शन टाइप कैसे करने का? हर एक फंक्शन का अपना अपना सिंटैक्स होता है. यू डोंट नो द सिंटैक्स, तो आई के ऊपर उंगली करने का. इंटरसेप्ट इनटू ब्रैकेट नोन y एक्सिस नोन x एक्सिस, सो इट इज इंटरसेप्ट ब्रैकेट. ब्रैकेट कोई भी फॉर्मूला हमेशा ब्रैकेट के अंदर होता है. y एक्सिस पे क्या है अपना? कॉस्ट. तो जहां y है तुम्हारा, उधर उंगली करने का. उंगली किया मैंने. B2. अगर घर पे तुम लैपटॉप पे कर रहा है तो माउस करो, नहीं तो तुम्हारा स्क्रीन टच नहीं होगा. मैंने सिलेक्ट किया ऐसे, ड्रैग किया. यू शुड नो दिस मच ऑफ एक्सेल. मैंने ड्रैग किया. किस चीज को ड्रैग किया? कॉस्ट को. सो मैंने y एक्सिस का रेंज दे दिया मैंने. कॉमा, कॉमा टाइप करो. किधर? इधर कॉमा टाइप करने का ऊपर. क्यों? एक आर्ग्यूमेंट हो गया ना. फंक्शन हैज टू आर्ग्यूमेंट्स, y and x. Now I need to give x. I go here. Did you observe? I go here. I drag it down. Then I close the bracket. I'll close what? Bracket. A2 to A13. तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? इंटरसेप्ट B2 to B13, comma A2 to hit enter. That's it. I got the answer. The same which we had got earlier. By manual working जो आंसर आया था ना, वही आंसर आ गया. मेरे डिजिट्स कम कर दिए सिर्फ. 43,275 is your fixed cost by regression method. If I use high-low, obviously answer will be different. High-low method will give different answer. This method will give different answer. समझ रहा है? एक्सेल पे किया,
हाउ मेनी गॉट द आंसर? ओ गुड गुड, लाइक इट। लगा नहीं था तुम्हारी लोगों की शक्लें देख के, मेरे को नहीं लग रहा था तुम्हारे बैच में इतना टैलेंट है। हाँ, शक्लों से तो बहुत कमी नहीं लग रहे तुम लोग। ऑनलाइन पब्लिक तुम्हें कुछ किया तुमने? इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर के बाद भी ट्राई करना। इंटरसेप्ट ऐसा फंक्शन है। आगे आओ तो टाइप कर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कार आ रहे यार, वो ऑटो टाइपिंग है रे। वैर का उसने क्या किया? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मतलब क्या है? स्लोप इज इक्वल टू टाइप करने का, इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू ऑनलाइन पब्लिक स्टार्ट, ऑफलाइन पब्लिक स्टार्ट, स्लोप इज इक्वल टू स्लोप। वो कैपिटल में टाइप करो या स्मॉल केस में टाइप करो, उससे कोई फर्क। यू शुड यूज इट स्लोप। अब मेरे को मालूम नहीं है फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या है। ये बहुत काम की चीज है बच्चों। बाय द टाइम ऑफ CF इंटर ओवर मैं तुमको रिटायर करवा के छोड़ेगा, मतलब रिटायरमेंट का प्लानिंग करवा के छोड़ेगा। सॉरी माय मिस्टेक। इट्स बाय planning it properly and using functions you can plan your life wonderfully. Obviously you have to execute it also. I clicked on what? I. तो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट समझ में आया? क्या आर्ग्यूमेंट है दिख रहेगा तुमको? आई कांट जूम दिस। नॉन वाई नॉन एक्स सेम आर्ग्यूमेंट है इसके भी। तो मैंने क्या किया? ब्रैकेट डाला। समझा क्या ब्रैकेट? ट्राई पब्लिक। वो डेटा आपने एक्सेल फाइल ओपन किया होगा टेलीग्राम ग्रुप से। अगर आपने डायरेक्ट टाइप कर रहे हो, डेटा ही नहीं है तो आंसर नहीं आएगा। वाई एक्सिस क्या दोषी जी? फोन नहीं आपके पास? डाउनलोड पैसा नहीं दिया ना? तो मैंने वाई एक्सिस सिलेक्ट किया, कॉमा एक्स एक्सिस सिलेक्ट किया, ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। देख टाइप किया मैंने, इधर दिख रहा है क्या तुमको? टाइप हो गया। Shall I hit enter? टाइटल नहीं लेने का, you should just take the values. Otherwise you will take title also. And hit what? Enter. Do you wanna see magic? Magic is here. आ गया। उसका फॉर्मेट में सिर्फ नंबर में कर रहा हूं। 53.42. What is 53.42? Variable cost. So you come to know what is a variable cost. You come to know what is fixed cost. Done. It's done. What is a variable cost and what is fixed cost? अब मेरे पास अगर लैपटॉप होता तो मैं आपको और कुछ सिखा सकता था। इससे स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करके स्कैटर डायग्राम का इक्वेशन भी आता है। फाउंडेशन में मैंने एक बच्चे से घर पे करके लिया था। कौन था वो? तुम्हारा सोमानी था ना? सोमानी तू आज घर पे है, लैपटॉप पे है? सोमानी केड़े लैपटॉप पे है? ओके, मैं आपको जिनके पास लैपटॉप है घर पे जाकर आप ट्राई कर सकते हो। स्कैटर डायग्राम अभी मैं इंसर्ट कर सकता हूं, उसका इक्वेशन इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा। ये देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे सिलेक्ट करने का। फोन पे भी आएगा ये। सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ ऊपर। उसके अंदर दिया है मैंने, लेकिन इक्वेशन नहीं रहेगा उसका। मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूं। इंसर्ट में जाने का, यू गो टू व्हाट? इंसर्ट। अच्छा, मैंने वो चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें शीट्स है मल्टीपल एक फाइल के अंदर। इंसर्ट, देखो यहां पे चार्ट्स है। चार्ट में स्कैटर डायग्राम सिलेक्ट करने का। स्कैटर डायग्राम देख रहे किधर? तो वो एक्स वाई स्कैटर है ना लिखा हुआ, वो किया मैंने। और आपको कैसा चाहिए स्कैटर डायग्राम? मेरे को ऐसा चाहिए। आ गया, ये आ गया स्कैटर डायग्राम। बट गधे को एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस कौन सा है वो समझा ही नहीं। ऑब्वियसली एक्सेल डज नॉट अंडरस्टैंड विच वन इज अ एक्स एक्सिस विच। नहीं, आया बराबर लिया उसने बराबर लिया। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिया, वाई एक्सिस पे कॉस्ट लिया। ये सिर्फ बुलेट्स है। अब इसका क्या करना होता है आपको? इक्वेशन। तो एलिमेंट्स में है, हाँ आ गया। एलिमेंट में जाने का, एलिमेंट में ट्रेंड लाइन जाने का, ट्रेंड लाइन में लीनियर लिखने का। लीनियर लाइन आ गया, लेकिन उसका इक्वेशन का ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। इन दिस, हाँ इसमें नहीं है, मेरे आईपैड पे नहीं दिख रहा मेरे को। ट्रेंड लाइन के ऑप्शंस आते हैं। देयर इज समथिंग, जाने दो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं डिलीट करता हूं। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ करके रखा है इधर। आई थिंक आई मस्ट हैव डन दिस ऑन अ लैपटॉप एंड देन शेयर्ड द फाइल।
देखो मैंने ये इक्वेशन यहां पे ड्रॉ किया, y इक्वल टू, मतलब व्हाट इज y, कॉस्ट, एक क्लोज द डोर, y इक्वल टू 53.423, व्हाट इज 52.423 बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ x, x इज अ क्वांटिटी, प्लस फिक्स कॉस्ट 43,276, ये टाइप नहीं किया है, वो वहां पर घर पे जिसके पास लैपटॉप है घर पे जाने का ट्रेंड लाइन ऑप्शंस करके आता है, ऑप्शन में शो इक्वेशन करके ऐसा आता है, उसके ऊपर टिक करने का ऑटोमेटिकली एक्सेल इक्वेशन क्रिएट करता है. Those who have laptop at home can try it. You can explore it tomorrow. You have Sunday holiday, so explore करना कल. फिर उसका आप बहुत सारा एनोवा एनालिसिस कर सकते हो. अगर आपका मैथ्स सुपर स्ट्रांग है तो ही आप ये कर सकते हो. बच्चों इससे पोर्टफोलियो एनालिसिस, म्यूचुअल फंड का एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन द मार्केट फायदा होता है. आई नॉट से कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, बट एक गुड इंसाइट मिलता है तुमको इससे. जाने दो. सो मैंने क्या सिखाया, एग्जाम में क्या आएगा, हाई लो पॉइंट मेथड. अगर इसी क्वेश्चन को मैंने हाई लो से सॉल्व किया तो आंसर पूरा अलग आएगा, कंप्लीटली अलग आएगा. क्यों, हाई लो में मुझे क्या करना है, अरे हाई लो में क्या करना है मुझे, सिर्फ हाई पॉइंट ये है. गया यार, ये पेंसिल क्यों परेशान कर रहा है यार. Just a second, it is troubling me a lot. आ गया. So high point क्या था तुम्हारा, ये 3,80,000 and 5,900. If somebody wants to use high point and low point, answer will be totally different. Totally different. So I'm sharing with you people. These both the files, Excel file, which is duly worked out. आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने एक्सेल फाइल और ये दोनों जो चीजें हैं वो शेयर करके रखी है, आप चेक कर सकते हैं. ये सारे फाइल्स आपको टेलीग्राम पे मिलते जाएंगे. ओ फाइल्स करके ऑप्शन रहता है टेलीग्राम पे, यू शुड बी नोइंग इट. आई डोंट नो वेदर इट इज रिसीव्ड ऑन योर टेलीग्राम. आ गया, 2 फाइल अभी भेजा होगा मैंने. एक्सेल वापस भेजा, दैट इज जो काम करके एक्सेल बनाया ना, वो एक्सेल मैंने शेयर किया. आ गया एक्सेल, दूसरा एक्सेल और पीडीएफ आ गया होगा. एक पीडीएफ भी आया ना, ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है वो टेलीग्राम पे आ गया होगा. इट्स ओके, इनफ. चलो कम बैक. सो इसका यूज कहां पर है बच्चों, बोलता हूं, डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए. इफ यू नो फैक्टर्स which are relevant for demand of your product, you can use it. Demand forecasting, I don't know, I have not done anything new. This is all what you have learned in CA Foundation. इसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट में और पोर्टफोलियोज का एनालिसिस करने के लिए एक मॉडल है, नोबेल प्राइज विनिंग मॉडल, CAPM, विलियम शार्प करके आदमी, उन्होंने दिया हुआ है. प्रैक्टिकली उतना होल्ड नहीं करता बिकॉज मार्केट, उनके जो अजम्पशंस है, दोज अजम्पशंस आर नॉट ट्रू. बट स्टिल जब आप वैल्यूएशन करने जाओगे रियल लाइफ में, CAPM is still used by lot of practitioners in real life, and that CAPM uses this similar functionality. I don't know how many are interested in learning that. FM के अंदर अभी नहीं, वो FM के अंदर सिखाऊंगा. हाँ, विलियम शार्प करके बंदा था, इसने CAPM करके मॉडल दिया था, नोबेल प्राइज विनिंग है. It tells you a lot, that it's entire portfolio theory. It will give you a lot of insights into understanding risk, understanding return. Right now we are looking at cost, but आगे जाके, थोड़ा आगे जाके हम रिस्क रिटर्न का बात करने वाले, यही लॉजिक के ऊपर. सिलेबस में, इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी है CAPM. अब मुझे नहीं मालूम कितने बच्चों को ट्रू स्पिरिट में ये समझाओगा. देयर इज अ कैपेबिलिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इट इन ट्रू स्पिरिट. अगर आप थोड़ा एफर्ट लोगे ना, आपको समझेगा ये ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. अब मैं इस चीज को स्किप कर दूं तो और अच्छा होता था मेरे लिए. मेरे को भी स्ट्रेस नहीं एक्सप्लेन करने का, तुमको भी स्ट्रेस नहीं, बट
यू वुड हैव मिस्ड समथिंग। मैंने सिर्फ तुम्हारा माइंड इग्नाइट किया, फंक्शन के 2 फंक्शन सीखे। बाय द टाइम यू फिनिश इंटरमीडिएट, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स which are practical. Kuch, now why do I need to remember the formula, correlation and all of that stuff? In real life, if you want a fixed cost of any particular company and you want to analyze, as an external user you cannot analyze, you should be working in a management. Imagine करो आप किसी कंपनी में फाइनेंस फंक्शन में काम कर रहे हो और एनालिसिस आप कर रहे हो, आपके पास तो पूरा डेटा रहेगा ना मंथ ऑन मंथ। ये महीने में आपका माँ बाप अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, प्लीज आज घर पे जाके माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव, उनसे बात करो। दे विल टेल यू लॉट, लाइक यू आर वर्किंग ऑन लेट्स से ओरेकल और मे बी एसएपी और एनी पैकेज, हर पैकेज के अंदर या हर सॉफ्टवेयर के अंदर दे विल हैव अ मंथ ऑन मंथ डेटा ऑफ व्हाट quantities produced, different cost. You can just export that particular data to Excel and do whatever analysis you want. ये तो मैंने आपको फ्रैक्शन एनालिसिस बोला सिर्फ। पुराने जमाने के बच्चे थे, मतलब अगर आपने एक्सेल शीट देखा होगा वहां पर बहुत सारी चीजें मैंने उसके ऊपर वर्कआउट की हुई है। एक आपने और एक शीट है उसके अंदर नीचे देखा होगा तो। सो इससे समझा सर, बट ये नहीं समझा कि रिस्क कैसे करें, समझेगा। मैंने रिस्क सिखाया नहीं तो भूषण चौधरी, अरे थोड़ा दिमाग लगाना रे, क्यों मैंने रिस्क सिखाया क्या? मैं बोला इसका आगे जाके रिस्क से कैसा लिंक है इस मॉडल का, ये तुम्हारे सिलेबस में है, मैं सिर्फ लिंकिंग क्रिएट कर रहा हूं यार। नेक्स्ट, तो आपने सिर्फ व्हाट आई वांट राइट नाउ इज ओनली 2 थिंग्स। फोन यूज करना एक्सेल के लिए एंड हाउ टू यूज अ फंक्शन इन एक्सेल। इवन इफ यू लर्न दैट मच इट इज इनफ। आपको ये पहले समझना चाहिए, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा ग्राफ है बच्चों? ये वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है? टोटल फिक्स कॉस्ट, नॉट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट। इन दोनों का मर्जर क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो उस सेमी वेरिएबल में से कितना वेरिएबल है, कितना फिक्स है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत काम की चीज है। ये सिखाया क्यों मैंने? वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, इसके ऊपर पूरा 10 मार्क का मिनिमम एक चैप्टर है, मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके बेसिस पे अभी मैं एक रेशो निकालने वाला हूं, सिलेबस में है, पहले ही बोल रहा हूं। अभी जो सिखा रहा हूं ये कोई बकवास नहीं है, रेशो बहुत बेसिक है। उसके एप्लीकेशंस अभी नहीं सिखा रहा हूं, एप्लीकेशंस मार्जिनल कॉस्टिंग में सिखा रहा हूं। अभी मैं सिर्फ रेशो सिखा रहा हूं। ये सिखाया क्यों? ये सिलेबस में है, हाई लो पॉइंट मेथड आता है एग्जाम में। अब रेशो देखो, क्या कौन सा रेशो निकाल रहा हूं मैं। गिव द हेडिंग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इससे बहुत सारा तुम एप्लीकेशन कर सकते हो। तुम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकता है, एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट करने का क्या रिजेक्ट करने का, ये तुम निकाल सकता है। ट्रिप प्लानिंग कर सकता है तुम। हाँ, मैं गोवा में बहुत सारे ट्रिप लेके गया। अभी आजकल बच्चे का रिस्पांस, वो बॉन्डिंग खत्म हो गया, लेकिन पुराने जमाने में बॉस, गोवा का फर्स्ट 5 स्टार होटल बोगमॉलो करके, मतलब वहां से आप रूम से जोर से कूदोगे तो समुद्र में जाके गिरोगे आप। दैट मच ऑन बीच। वहां पे जाके मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग करके ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने उनको भी प्रॉफिट में लगाया था, और बच्चों को तो उस जमाने में तो मतलब क्या 6-7 हजार रुपए में, या सीधा दे गोवा करके के ऑल 5 स्टार hotels were there. Bogmol is the first one in South, way back. क्योंकि by applying marginal costing you negotiate. You will, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके एप्लीकेशन 7-8 एप्लीकेशन सबके सिलेबस में। You will learn negotiation power. I'll show you how I negotiated with 𝗙𝗪 during a lockdown. 𝗙𝗪 मतलब होटल का जो रूम था, it's about 1,20,000 rupees per night, which I negotiated somewhere around 50-60,000 per night. हाँ, लीला इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन इंडिया। तुमको मालूम नहीं है। और मैंने फिर उस दिन बच्चे अटेंड नहीं कर रहे थे लेक्चर, तो मैंने फिर सचिन तेंदुलकर को लेक्चर को बुलाया था। सारे बच्चे अटेंड करने लग गए लेक्चर को। हाँ, एक बच्चा पूना से उधर मिलने आया बाकरवड़ी लेके। 2021 का बैच, पूछ के देखा उनको। यू डोंट नो द कैपेबिलिटी ऑफ द, ये ratios use करके, I'll show you actual emails, conversation with invoices if you want.
there is a potential. You using this concept, you can negotiate well, provided you have communication skills. ये टेक्निकल, बट तुम्हारे पास डोमेन, मैंने आपको फाइनेंस कैप्सूल में 3 चीजें बोली थी बच्चों, 3 चीजों पे जिंदगी में वर्क करना. One is a domain knowledge, the next one is a communication skills, and the next is a technology. Majority chartered accountants keep a domain knowledge, that to extreme basic. You have to have a domain expertise in a finance and then learn communication. Technology, ये चीजें, और आपके हर एक में, आप गांव से आए हो या आप सिटी एरिया से हो, कहां से भी हो, एनी फैक्टर इज रिलेवेंट. एवरीवन हैज अ कैपेबिलिटी टू लर्न, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू स्पेंड अ टाइम. हाँ, इट मे हैपन, सम स्टूडेंट्स माइट अंडरस्टैंड इन 2 minutes, some students might take 2 hours. It's okay. Do you think I was in a position to understand all of this in the first day in my life? No. But what I told you yesterday, I had that fire in the belly to learn. What you people are missing is that fire. रेशो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, नाम से कोई लेना देना नहीं है. पीवी रेशो, पीवी रेशो. So listen up. Sir, is the method that you taught on Excel is more practical than high-low point? Yes, this is at least more practical than the high-low point. Why? It considers more data points. But to use this method in real life, you have to keep price level to be same. So you have to use inflation index. ये जो inflation index का concept बोला ना बच्चों, ये 11वीं 12वीं, those who have done the CBSE at least. I don't know how many of you learned GDP deflator, CBSE or ICSE. GDP deflator, कुछ याद है तेरे को? थोड़ा थोड़ा. This concept, what I was explaining, to keep price levels is used to analyze economies, to convert nominal GDP of a country into real GDP, to compare per capita income of one country with another country. अगर आपको लग रहा है India is a very very poor country, it is not as poor as what you think, provided you understand this inflation kala concept. There is something called as a purchasing power parity. On base, India's per capita income is approximately $2,000 per person per annum. $2,000 approx. US is around $50,000 per person. 50,000 भी मैंने कम बोला, 50 के ऊपर ही है वो. US per capita, just a second, 50 per capita GDP, GDP per capita GDP. If you look at it, 70,000 is United States 2021 में. मैंने तो बहुत कम बोला. United States is 70,000. अगर मैं इंडिया लिखूं यहां पर 2-3 हजार के लगभग आएंगे हम. 2,200 is India. When you look at these numbers, you think how poor is my country. It's not. आप बोलेंगे why not sir? वो तो दिख के आ रहा है सर, पाकिस्तान भी 1500 पे है सर. हम तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं. That's where you have to understand price levels. Price level in India and a price level in United States is very different. A kg of tomato in India and a kg of tomato. आपको लग रहा है हमारे यहाँ पे टोमेटो बहुत महंगा है, तो बीजेपी वाले लोगों को जाके बोलो ये आर्ग्यूमेंट दे दो, लुक एट द प्राइस ऑफ टोमेटो इन यूनाइटेड स्टेट्स. लेकिन पब्लिक को नहीं समझता ये. Cost of living in India is much cheaper. If you adjust this $2,000 for that cost of living differences, then there comes a something called the purchasing power parity. यही concept आपको cost analyze करते time पे भी लगाना पड़ता है. Because when you are analyzing costs at a different point of time, when you are analyzing costs at a different points of time, बच्चों, price levels are different. You must keep same price level. Only when you keep same price level, you can do analysis of a cost. Otherwise, price level का impact आ गया. अब जाने दो. देखो अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है?
profit volume ratio is equal to contribution divided by sales multiplied by 100. Contribution divided by sales multiplied by what? 100. Did you get it? What does this ratio tell you? Contribution for every 100 rupees of sales. हाँ बोलेंगे सर what is contribution, but ये तो तुमने बोला ही नहीं. बोल रहा हूं ना अभी. Contribution is sales minus variable cost. That is why you should know which one is a variable, which one is fixed. इसके बहुत यूज है. मैं अभी यूज नहीं सिखा सकता अभी आपको. मतलब मैं सिखा सकता हूं, तुम नहीं समझोगे. That's why ये यूज सिखाऊंगा तुमको सिलेबस में तुम्हारे. पीवी रेशियो. Using this you can calculate a break-even point. Using this concept you come to know how to increase the profitability. Using this concept I had picked up one daru wala company at around 560 per level, trading now at almost 950. United Spirits. It's not time to buy now, but this concept led United Spirits, which is now the largest one in the entire world. It is owned by Diageo Corporation, largest wine and alcohol manufacturer in the entire world. How did they use to restructure a company which was in losses, which was to be, whose promoter left India, sudden of all, Dr. Vijay Mallya. The company United Spirits was started by Mallya's father, but Mallya continued and Mallya made it even bigger. And Mallya left India, obviously political reasons, whatever. The company was in deep trouble. From a deep trouble to a success which is yet not completed, abhi bahut aage jayega, was because of applying concept of PV ratio and improvement of PV ratio through something called the sales mix. ये पूरा चीज तुम्हारे सिलेबस में है. तो पीवी रेशियो क्या है पहले समझ लो. पीवी रेशियो का मतलब क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स. ये रेशियो का मतलब क्या है? लिखिए. इट टेल्स अस contribution. It tells us contribution per 100 rupees of sales. आप बोलेंगे सर कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट लेफ्ट टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट. कोई भी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट रिकवर करना एक रिस्क होता है. क्यों? यू मेक अ सेल्स बट एंटायर सेल्स इज नॉट यूज्ड टू मीट द फिक्स कॉस्ट ना. आउट ऑफ योर सेल्स समथिंग गोज टुवर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट. Whatever goes towards variable cost you have to deduct, and remaining amount is the amount out of which fixed cost is met. Contribution, it is the amount, contribution underline करके लिखो, it is the amount from which, it is the amount from which fixed cost of business are met. It is the amount from which fixed cost of what? Business are what? Met. कुछ समझा गया? फिक्स कॉस्ट जो मीट करना है आपको, इंकर कर, विच आर मेट मतलब इंकर्ड. Whatever sales I make, I will reduce the variable cost first. And then the left out amount, whatever it is, out of that left out amount, I will meet fixed cost. From a left out amount, I will meet fixed cost. The balance is what? Called operating profit. Balance is profit. Right now, profit. Operating profit, go over. Sales, less variable cost, less fixed cost is a profit. Right now, just understand profit. Which profit, what profit, वो मैं आपको और लेके जाएगा आगे.
वो प्रॉफिट को मेरे को इबिडा पे लेके जाना है तुमको, इबिडा मार्जिन पे लेके जाना है, मुझे डूपॉन्ट पे लेके जाना है तुमको। अभी तक जस्ट शुरू हो रहा है, ऑल ऑफ दिस इज एनालिटिक्स। सो पीवी रेशो क्या बोलता है? इफ आई से फॉर एग्जाम्पल, if I say PV ratio is 32%, what does it mean? PV ratio is 32% का मतलब क्या है? Variable cost is 68% of what? Obviously both are of sales. Huh? This is not same as a gross profit ratio. Gross profit ratio is totally different. I will come down to GP ratio. I'll come down to net profit ratio. I'll come down to EBITDA ratio. EBITDA margin करके होता है। धंधे का 360 डिग्री एनालिसिस है। एक दो लेक्चर लगेगा, आपको लगेगा कि हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं या हम थोड़ा भटक रहे हैं। नहीं, तुमको मालूम नहीं हम कितना ट्रैक पे है। क्योंकि नॉर्मली बाय द नाउ जनरली पब्लिक जो है वो कॉस्ट शीट भी खत्म कर सकेगा, क्योंकि फॉर्मेट हो गया होगा। कॉस्टिंग का मतलब हो गया तो डायरेक्ट कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तुमको चाहिए, तो तुमको जो बुक मिला है उसमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रहेगा। ये जो भी मैं बक रहा हूं ना, तुमको सिर्फ मार्क चाहिए ना, एक पेज रट लो और फेल हो जाओ। पेज नंबर 41 पे एक फॉर्मेट दिया है मैंने, वहां पर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और रटने का, बस। मुश्किल नहीं है एनालिटिक्स, क्या तेल लगाने। सुन ले, 32% इज व्हाट योर वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इसको, या पीवी रेशो। PV ratio is 32%, मतलब out of 100 rupees, 32 is what? 32 is a contribution, amount left out of sales to meet fixed cost. तो बच्चों, can you get PV ratio without analyzing cost into variable and fixed? No, you have to analyze cost into what? Variable and fixed. वो कॉस्ट डायरेक्ट है या कॉस्ट इनडायरेक्ट है, ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है, वो मैं सिखाऊंगा। दैट इज नॉट लिंक्ड। व्हेन यू कैलकुलेट अ फिक्स पीवी रेशो, आस्क ओनली वन क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? हे कॉस्ट, आर यू वेरिएबल और आर यू फिक्स्ड? कॉस्ट बोलता है नहीं, आई एम सेमी वेरिएबल। तो उसको बोलने का रुक, लेट मी बाइफरकेट यू इनटू व्हाट? वेरिएबल एंड फिक्स बाय यूजिंग either high-low point method or least squares method, or just analyze the vouchers and decide how much is variable, how much is. बच्चों, bifurcation of semi-variable cost into variable and fixed is not science, is art. That's why different methods will give different answers. Items हो गया मस्त। देखो ब्लैक शर्ट उठा उसको, स्टैंड अप। ब्लैक शर्ट स्टैंड अप। ओ सोने वाला आइटम, स्टैंड अप। कान पकड़, दोनों 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 से उठक बैठक 3 बार। कान पकड़ 3 बार आराम से। हाँ, बैठ जा। क्या बेटा है, हेडेक हो रहा है? मैंने कल ही वार्निंग दिया था, डेमो पब्लिक मंडे से अंदर आने नहीं दूंगा तुमको। किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, आप लेक्चर के अंदर हाथ ऊपर करो, सो जाओ। मैं परसों ऐसा ऐसा गालियां देगा ना तुमको, आराम से। अभी आंखें वगैरह कर रहा, मतलब इतना गहरा नींद उसका था। तेरे को फिजिकल प्रॉब्लम होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने कल क्या बोला था? हाथ ऊपर करके बोलो। सीखना ही नहीं तेरे को तो जाना बेटा घर पे। ये तुम्हारा जनरेशन है, दिस इज द फ्यूचर। क्या करेंगे यार। एक बुक में तुमको ये जो मैंने इंटरसेप्ट, स्लोप, या किसी को मालूम भी रहेगा ना,
मंडे से विदाउट एडमिशन अगर कोई क्लास में दिखा तो देखो। हाँ, तुम्हारा कोई फाइनेंशियल किसी का प्रॉब्लम है, आके ऑफिस में मिलो, स्टाफ हेल्प करेगा, मुझे मिलो, मैं तुमको हेल्प करेगा पेमेंट करने के लिए। लेकिन डेमो देखने के लिए आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ एनी स्टूडेंट इनसाइड अ क्लास। 99% आइटम डेमो रहेगा। क्या आइटम? डेमो आइटम ना। ये दिया, इतना पैसा यार मेरे को देना और थोड़ा। फी दे के सोता है यार तू, मेरे को थोड़ा देना प्लीज। है ले देना। क्या बेटा यार, पैसा देके सोता है यार तू। दर्द है तुमको तो मुझे फिजिकली किसी को प्रॉब्लम है कभी भी नहीं करेगा यार। पर तुम लोगों को ये उम्र में अगर तुम लोग नहीं समझोगे चीजें, योर लाइफ इज गोइंग टू बी डेवास्टेटेड। नो वन, नो टीचर विल टेल यू दिस, बिकॉज एवरीवन इज इन द बिजनेस ऑफ धंधा, पैसा कमाना। So what do you come to know from PV ratio? You come to know about how much margin you are generating after meeting variable cost. On your screen, angles to analyze profitability. तीन बच्चे. Contribution margin. This is nothing but PV ratio. GP ratio. OPM. Operating profit margin. Before you start thinking about charas ganja. So ये ऐसे पनिश डेमो में है तो इसलिए मैं बोलता रहता हूं, ऐसा कोई बच्चा टाइम पास करेगा कुछ करेगा तो हम ऐसा उठक बैठक का पनिशमेंट देता है। फाउंडेशन में कितने लोगों ने उठक बैठक मारा था? हाँ, आंसर रॉन्ग हुआ था। हाँ, अच्छा बेसिक पे रॉन्ग है तो पूरे क्लास को उठक बैठक मरवाऊंगा मैं। क्यों? जिंदगी भर याद रहना चाहिए कि हमने बेसिक में माती खाया था। किस में माती खाया था? एडीडी में माती खाया था, कुछ तो नंबर ऑफ डेज में माती खाया होगा, कुछ तो इंटरेस्ट में, संडे को इंटरेस्ट लिया था। लिखो एंगल्स टू प्रॉफिटेबिलिटी। Angles to what? Profitability. There are three angles from which we analyze a business. The one that I explained to you right now is just one. Contribution margin. But these are for internal users. So all these things which I'm explaining you will not find necessarily in an annual report or the financial statements. Huh? Why? This is for what we are learning, management accounting. ये contribution margin external investors को generally मालूम नहीं होता है. Why they are not aware? Logic is quite simple. How much is variable, how much is fixed? It is very difficult for external person to understand. Why? Company का जो P&L होता है, P&L में cost is not shown on the basis of variable and fixed. In schedule 3 profit and loss account का जो format है, that format is not on the basis of variable and fixed. Then you will say, sir, why are we learning? This is not for external persons. Internally, when you are a part of company, you know everything about your cost. And if internal persons don't know about cost, you should buy Godrej lock and close a business. Why? I don't know anything about costing or finance and I am teaching you. Unfortunately, आजकल ये भी चलता है. Even if you don't know the great things about the content, चलता है. Contribution margin. दूसरा क्या है? OPM, Operating Profit Margin. मैं एक word use कर रहा हूँ, margin. Margin means percentage of sales. और तीसरा रहता है gross profit margin. Margin is something percentage of sales. Contribution margin. बोलो, how do you get contribution margin? नाम में लिखा है यार. Contribution upon into 100 percentage है, which is another margin. Operating profit margin.
ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम EBIT बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन sales. Or operating profit. What is operating profit? I am yet to explain in detail. I just explain one angle, variable and fixed. वो एंगल से कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया, उसका यूज आई हैव नॉट एक्सप्लेन राइट नाउ. कंट्रीब्यूशन रेशियो, ये जो रेशियो है इसका यूज होता है टू फाइंड अ ब्रेक इवन पॉइंट, टू फाइंड चेंज हाउ. If I have capacity to sell something, how much should I sell of product A, product B, product C? If raw material is not available in abundance, there is a short supply of raw material. Whatever available raw material is there, where should I use it? Decision लेना पड़ता है. If you have capital which is limited capital, where should I put my capital? I have multiple products that I can sell, but I don't have enough capital. These are practical situations. There are so many businesses I can do, but I don't have money. So whatever money I have, where should I put it so that my overall profit can be maximized? Should I export or not? Should I accept the order at a lower price or not? Should I shut down my plant for some period if demand is low or not? All these decisions will be able to take. Not all of them are in your syllabus. Gross profit ratio is what? Gross profit upon sales. तो फॉर्मूलाज सिंपल है, इनका यूज बहुत पावरफुल है. तो अभी मैंने एक एंगल बोला. नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स अनदर एंगल. विच एंगल आई हैव एक्सप्लेन टू यू. For understanding contribution margin, how did we divide our cost? Our cost was divided into variable and fixed. If anything is not fitting in variable fixed, we call it a semi-variable, and semi-variable को भी हमने on your screen, cost, variable, fixed, semi-variable. Semi-variable को something put in variable, something put in, so that sales minus variable is contribution. From this contribution I meet fixed cost. Listen up to this line. ठीक से सुनना. Moment you set up business or moment you start a business, you create certain capacity. On day one you might not create the entire capacity that you want. You might go slow on day one. समझता है ना? You start a business with some capacity. When day one you have entered into obligation to meet fixed cost. धंधा चालू किया मैंने. दिख रहा है तुमको इधर? क्या ये? फैक्ट्री. ये फैक्ट्री का जो रेंट है, ये फैक्ट्री का जो डेप्रिसिएशन है, ये फैक्ट्री में देखो तुम काम कर रहा है इधर, उसका सैलरी है. ये जो सारा फिक्स कॉस्ट है, आई हैव टेकन एन ऑब्लिगेशन. दैट इज अ रिस्क. दिस इज अ रिस्क. आपने क्या सीखा? रिस्क है तो इश्क है नहीं, रिस्क है तो रिटर्न है. एक्सपेक्टेड रिटर्न. आपने रिस्क लिया. रिस्क कब आपको बेनिफिट देगा? जब आप इस फिक्स कॉस्ट को कंफर्टेबली मीट कर पाओ. ये फिक्स कॉस्ट आप कहां से इंकर करते हो बच्चों? सेल्स में से क्या? नहीं, सेल्स में से क्या माइनस होता है? वेरिएबल कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन रहता है. सो दैट कंट्रीब्यूशन शुड बी इनफ. कंट्रीब्यूशन शुड बी टू मीट. Is contribution enough to meet fixed costs or not? There is a huge risk. आप बोलेंगे how? Let me give you an example. You will be shocked. Maggi was a super duper flop product in India. आप बोले क्या बक रहा है यार ये? That is what you don't understand. Nestle had to withdraw Maggi from India. Not after that Ramdev Baba episode.
way back. Why? Maggie did not click in India. Maggie did not click. अब बोले क्या बात कर रहे हो यार? How can somebody not like Maggie? Customers' taste and preferences is a big factor. When you set a business, there is a risk that you carry. That what if customers don't like the product, and due to which my sales are lower. If my sales are lower, because of that, I am not able to generate enough contribution. Because of that, I am not able to meet fixed cost. Risk है क्या नहीं धंधे में? Shouldn't you analyze the risk? Yes. है आगे जाके application. So that is why you need to bifurcate your cost into variable and fixed. Because risk किसके लिए है? Risk is not for variable cost बच्चों. Risk is of. आप बोलेंगे क्यों सर? Variable cost को risk क्यों नहीं है? When do you incur variable cost? When you make a sale. So if I'm not going to make a sale, I'll not incur variable cost. Yeah, I might incur some variable cost. Like I purchase raw material, I produce goods, and if they are not getting sold, I will not incur the variable cost again, na? मैंने धंधा चालू किया, कुछ रॉ मटेरियल खरीद के मैंने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करके रखा, नहीं बिका, तो मेरा रिस्क कितना है? जितना मैंने प्रोड्यूस किया था उतना ही ना. अगर माल नहीं बिक रहा है तो मैं क्या करते रहूंगा? बनाते रहूंगा क्या? बट व्हाट अबाउट द प्लांट दैट आई हैव ऑलरेडी सेट अप? वो तो ऑलरेडी मैंने सेटअप करके रखा है. आई कांट स्टॉप दैट नाउ. प्लांट तो ऑलरेडी बन चुका है. So you carry a much higher degree of risk for fixed cost. You carry lower risk for what? So you must know while setting up the business, should I set up a business in a manner where fixed cost is too high, or should I go slowly? No, yeah, that depends. Should I go slowly or should I go aggressively? That depends a lot on who is starting a business. If I am starting business, I might be slow. If Mukesh Ambani starts a business, he might not be slow. He might be very, very aggressive. Why? There is a huge capital to back it up. I go. The way Reliance Jio Financial Services has gone, next week, Reliance Jio will be listed on the stock exchanges. Jio on day one will come in a top 3 financial services company in India without any great business as such. On a first day it will be top 3 company in the financial services space. Why? That much capital is there. They have not started with a small capacity. They have started with 1 lakh crore capital. क्यों? Reliance is there यार. Now if somebody else want to start up a business, like अभी एक IPO आया था 2-4 दिन पहले, SBFC. It is run up by chartered accountant only. They started with a meager small 4-5 crore rupees. Now they have come to 5,000 crore. But they started with the 4-5 crore. Reliance Jio, day one, 1 lakh crore. It makes a difference. But what you need to understand is, for a Reliance, their ability to bear losses or ability to bear risk is much higher. So they can afford a business which has a heavy fixed cost. Someone else who is at the initial stages of a business, or a company which is at the initial stages of its corporate life, cannot afford it. Why it cannot afford it? If you are not going to succeed, you will be over. Nestle could take a chance with Maggie. Why? Maggie was not the only thing for the Nestle. Maggie was just one of the item for Nestle, that too worldwide. But imagine, just imagine, Nestle had launched Maggie in India and it was a flop product. Just imagine, it is not a Nestle, it is Mr. ABC. ABC company launched Maggie and Maggie failed.
And that Maggie was the only product, only business of ABC company. ABC company would have been bankrupt. Or it would have been over. Why? You need to understand at what stage of corporate life you are. And that is why analysis of the cost matters. How much risk should I take? Fixed cost is a risk. You should know while doing a business, should I be taking that risk or not? And that is why financial statements or analysis is required. Many people do not understand this. So I must understand, how should I pivot? Pivot means how should I change myself? How should I keep on evolving myself as a business entity? As a business entity, how should I evolve? Let me give another kick-ass example. You will go mad. 𝗙𝐸𝐴 how many of you know? Good. Thank you. At least. अच्छा लगा. 𝗙𝐸𝐴 is a person who started off with the Avenue Supermart, which runs DMart. They ran one store in Mumbai for multiple years. Why? They did not have expertise in grocery retailing. So they grocery retailing, imagine on day one, if they had set up 100 stores, or in a very small span of time, if DMart would have set up 100 stores, you are going to go mad, huh? There was a huge risk. Setting up every store, I hope you know, DMart, I hope you are gone. If you are not gone to DMart and you don't know DMart, there is a door. And go to DMart first. And bring one chocolate for me. Shareholder rule again, DMart is not a good, it's not showing growth. So DMart, 𝗙𝐸𝐴 was a very, very successful stockbroker. आपने अगर स्कैम करके सीरियल देखा होगा, हर्षद मेहता को खत्म करने में जिसमें बहुत बड़ा बेयर गैंग का जो रोल था, उसमें 𝗙𝐸𝐴, राकेश झुनझुनवाला लोग थे. They were just saved by luck. 𝗙𝐸𝐴 would have been bankrupt if Harshad Mehta would have been able to pull off his position for about 6-7 more days. 6 या 7 दिन से वो आदमी बच चुका है. That was the luck wala part. But he knew that what Harshad Mehta was doing was wrong, but he could not do anything. That story I'll tell you at some other point of time because आपके पास उतना brain नहीं है. 𝗙𝐸𝐴, when he started DMart back in 1999, 2000 somewhere, exact year you can, 2001 should be. DMart का एक स्टोर चालू किया ससुर ने. क्यों? एक स्टोर सेटअप करने के लिए इमेजिन द क्वांटम ऑफ फिक्स कॉस्ट दैट यू नीड टू इंकर यार. स्टोर का रेंट हो सकता है या स्टोर का डेप्रिसिएशन हो सकता है या कैपिटल कॉस्ट हो सकता है. DMart followed the strategy of owning the stores. DMart के majority of the stores or virtually all the stores are owned by DMart. You want to apply brain? Yes. These stores had a heavy fixed cost, so they went slowly first on understanding business. At the same point of time, there is another person who is a dropout of the CA course. 𝗙𝐸𝐴, Big Bazaar. They just set up the stores at a fast, initially it was a very good going. They set up the stores at a fastest possible speed. Big Bazaar, which was doing good. They went into Central, they went into factory, because a brand factory. They went into lot of other business. They went into insurance, future generally insurance. They went into electronics. They went into interior, home bazaar या ऐसा कुछ तो चालू किया था. Electronics के लिए भी कुछ तो चालू किया था. So they went into so many businesses at a rapid speed, for which capital was raised by way of a debt. Obviously, profits were not generated to that extent. What happened was, there is a slowdown that came up in this retail. When online retail came up, these companies started facing a slowdown, due to which the contribution that was generated started coming down, or the growth rate of the contribution became slow. As the growth rate became slow, but the fixed cost remained fixed. Interest is also fixed cost. क्यों? Interest तुम्हारे sales पे dependent रहता है क्या? All the stores that a Big Bazaar had expanded, to a large extent Big Bazaar had taken a loan. Today there is no Big Bazaar, but today there is a DMart.
Why? DMart understood that risk, that this business is excessively dependent on a fixed cost. क्यों? Imagine, यार, this store rent, store fixed cost, store electricity, store का staff का salary. Tomorrow, if there is no one single person comes up in a DMart store, still they have to incur electricity. Why? कोई आ नहीं रहे, चल रहा लाइट बंद करके रख. कोई आ नहीं आ रहे, अंदर कुछ और हो जाएगा. कोई आ ही नहीं रहा है स्टोर के अंदर, आप एम्प्लॉइज को बोलते हो चलो जाओ निकलो बाहर, कोई आ नहीं रहा, कोई कस्टमर आ गया, एक एम्प्लॉय तू अंदर आ चल. डू यू थिंक इट इज डन? Moral of the story, you have to pay to the staff, you have to incur rent, you have to incur electricity, you have to incur insurance, you have to incur all the costs even if sales is fixed cost है. Risky business है. अगर risky business है तो I must ensure that I will be able to generate enough contribution. I must analyze my product, I must analyze my competition, I must get a proper comfort over my business. DMart never went through the debt route. बिग बाजार का तो डेटा नहीं मिल पाएगा अभी अपने को, क्योंकि कंपनीज ओवर नहीं लिस्टेड था लेकिन खत्म हो चुका है. लुक एट दिस. Avenue Supermart kept on expanding, but if I look at the balance sheet of Avenue Supermart, ये debt borrowing है ही नहीं. ये जो borrowing है, that is accounting borrowing, long term borrowing of Avenue Supermart, zero. It did not added fixed cost to its business in the form of interest, intentionally. It said we are not going, we will expand slowly, but we will expand only when we get enough profit from existing stores, or we get additional equity capital from owners, then only we will set up a new stores. क्योंकि वो स्टोर सेटअप करने का कॉस्ट जो था वो फिक्स था. वो भाई साहब ने, दिस वाज राधाकिशन दमानी, स्टॉक ब्रोकर था ना, उसको समझा था क्या है स्टॉक मार्केट, उसको समझा था धंधा क्या है, तो उसने फिक्स कॉस्ट नहीं किया. अभी आई डोंट नो फ्यूचर ग्रुप का यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या, फ्यूचर रिटेल मिल रहा है थोड़ा बहुत. अगर आप इनकी बोरिंग देखोगे, आज भी 4,000 करोड़ का लोन है इनके ऊपर, और शॉर्ट टर्म 9,000 करोड़ का. एंड फ्यूचर ग्रुप was much smaller than Avenue Supermart. Avenue DMart के इतने सारे स्टोर्स होने के बाद भी डेट उसने जीरो पे रखा. क्यों? He kept on opening new stores by either profits that were generated by earlier stores or by bringing capital from owners, not debt. Debt has a fixed cost. Equity does not have. अब आप बोलो ना बच्चों, मैंने तुमको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया होता. मैं ये अक्षय, क्या नाम बोला था, आयुष को नहीं चिल्लाया तो बेटा तेरा नाम सिद्धार्थ को चिल्लाया नहीं होता, कुछ भी नहीं चिल्लाया. मास पे गए एक गाना आने के बाद या चलो गाना गाते हैं, या कोई अच्छा सिंगर तुम में से तो उसको बुला के चल बेटा गाना गा ले, या मैं मेरा स्किल्स, इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस एंड ऑल ऑफ दिस, आई every day I search on Instagram what kind of skills are being used to attract this idiot generation. And I remember the songs, कुछ तो लिख के लाता हूं या कुछ ऐसी चीजें करता हूं जो तुम्हारे दिमाग के लिए कुछ भी काम की नहीं, मेरे धंधे के काम की है, तुमको बनाने के लिए. बोल नहीं सकता हूं. अब आप सोचो ना कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट. देयर इज अ रिस्क दैट यू कैरी व्हेन यू set up a business and you agree, you commit on a certain level of fixed cost. There is a risk. Bachcho, there are so many businesses which have gone bankrupt who are not understood risk. Anil Ambani is another classic example of this. Went on so aggressively, boss, you need to understand there is a risk. That risk is what if tomorrow your product doesn't work? There is a risk. What if your product doesn't work, there is no contribution. If there is no contribution, but there is a fixed cost, can you say to your landlord, I don't have sales, hence I will not pay rent? Can you say to your banker, I don't have sales, hence I will not pay your interest? Can you say to your employees, I don't have sales, hence no salary? Can you say to electricity company, I don't have sales, hence no electricity payment?
There are so many costs that you have to pay. What is that? That's a risk. When do you understand risk? When you present a financial statement like this: sales less variable cost, therefore contribution less fixed cost, therefore profit. Which profit? I'll explain you on Monday. Thank you. उसके बारे में कमेंट करना मुश्किल है, उसका जेन्युइन कितना है फाइनेंशियल सेटलमेंट